Assalamu alaikum. Dear participants, this is Dr. Shuja Ahmad, and our today's topic is critical and analytical reasoning. But the topic that you see on the screen is the art of argumentation. The idea is once you learn the art of argumentation, you learn critical and analytical reasoning both. This is an, you can say, this will introduce you to the topic. Obviously, you are teachers and you know that we would not be able to cover everything. So you can say that today's presentation will introduce you to the topic. Let me tell you that how we will proceed. The whole session will revolve around this. The only safeguard against reasoning ill is the habit of reasoning well, familiarity with the principles of correct reasoning, and practice in applying those principles. So the whole session, the whole presentation and the whole session, the question answers, and the problems that you will solve would revolve around this quote of John Stuart Mill. The only safeguard against reasoning ill is the habit of reasoning well, familiarity with the principles of correct reasoning, and practice in applying those principles. मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों को आवाज जो है ना आ रही है, तो अगर आवाज आ रही है तो मुझे I would not be able to read the chat because there are around 600 participants right now. Okay, thank you. So this is the idea, that the whole session in the whole session we will try to understand principles of correct reasoning. We would not be able to familiarize ourselves with all the principles of correct reasoning. Again, this is an introductory session, so you will be introduced to the topic. इसके बाद अगर तुम लोग इसमें तुम्हारी दिलचस्पी है तो तुम आगे जा सकते हो. This is how we will go. In the beginning, we will have a problem. Then we will try to familiarize ourselves with some of the key concepts. Then we will move to critical thinking and informal fallacies. And then we will have discussion. I don't know how we will do discussion because there are so many participants. But I would be taking questions. Chat pe ya jaise bhi hum kar sakenge. This is our first problem. You have 30 seconds to 1 minute to answer the question. A bat and a ball together cost 110 rupees. The bat costs 100 rupees more than the ball. How much does the ball cost? मैं chat को देखता जाऊंगा कि तुम क्या जवाब देते. Thank you. 10. मैं थोड़ा इसको उर्दू में भी बता दूं क्योंकि बास पार्टिसिपेंट्स कह रहे हैं कि उर्दू में. एक बैट और बॉल जब आपने खरीदे तो उनकी टोटल कीमत जो थी 110 रुपए थी. अगर बैट बॉल से 100 रुपए महंगा है तो बॉल की क्या कीमत? Information is not incomplete.
अच्छा, अब हम इसके जवाब की तरफ आते हैं। बहुत थोड़े से लोगों ने इसका ठीक जवाब दिया है, और अभी चूंकि वक्त गुजर गया है, लोगों ने सोचना शुरू कर दिया, तो अभी जो है ना, ज्यादा लोग ठीक जवाब देना शुरू कर दिए। जवाब, इट इज नॉट 10 rupees. Most of you have written 10 rupees. It is not 10 rupees. It is 5 rupees. एक पार्टिसिपेंट ने पूरा चार्ट बना के इसको साबित भी कर दी कि ये 5 रुपए। अब चूंकि 5, अब ज्यादा जवाब जो है ना 5 रुपए आना शुरू। अगर आप अपने जवाबों को शुरू में देखें तो मोस्ट ऑफ यू थॉट दैट इट इज 10 rupees, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट आंसर दैट कम्स टू योर माइंड। हमारे दिमाग में जो सबसे पहला जवाब आता है वो ये है कि ये 10 रुपए होगा, क्योंकि 110 रुपए टोटल प्राइस है। ऐसा लग रहा है कि बैट की कीमत 100 रुपए, बट इट इज नॉट 100 rupees. द प्रॉब्लम इज सेइंग द बैट कॉस्ट्स 100 rupees मोर देन द बॉल। बैट की कीमत 100 रुपए ज्यादा है बॉल से। तो अगर बैट की कीमत 100 रुपए ज्यादा है और टोटल प्राइस जो है 110 है, तो बॉल हो गया 5 rupees का। बैट इज 100 rupees मोर देन द बॉल, यानी बैट बॉल से 100 रुपए महंगा है, तो बॉल की कीमत, बैट की कीमत हो गई 105 रुपए। सो 105 plus 5 equals to 110. If you think that it is 10 rupees, then the bat would be 100 rupees more than the ball. Then the bat would be 110 rupees and the total price would be 120. जो बात हम समझना चाहते थे वो ये था कि whenever we face a problem, the first type of thinking comes into action. We call it thinking fast. Thinking fast is normally emotional, it is normally impulsive. It may not be correct. It may be correct, but in most cases it is not correct, क्योंकि आपने उसके ऊपर ज्यादा सोचा हुआ नहीं होता। और normally whenever we face a problem in our lives, thinking fast comes into action and you give a prompt answer, an impulsive answer, an emotionally charged answer in most cases. Your response is not logical response. अगर तो ये मैं चैलेंज ना करता तो तुम में से बहुत सारे लोग, सेशन खत्म हो जाता, कल परसों तक यही सोचते रहते कि इसका जवाब 10 रुपए है, और शायद सारी उम्र सोचते रहते। बट व्हेन योर थिंकिंग फास्ट इज चैलेंज्ड, thinking slow comes into action. Thinking slow is logical. Thinking slow is it is like you think about an issue and then you solve it. Why we call it thinking slow? Still I'm thinking it is 10. जो भी सोच रहा है कि ये 10 रुपए है, तो मैं दोबारा से इस सवाल का जवाब दे दूं। टोटल प्राइस इज 110 rupees. Bat is 100 rupees more than the ball. टोटल कीमत जो है 110 रुपए है। बैट बॉल से 100 रुपए महंगा है, तो इट कैन नॉट बी 10, बिकॉज इफ इट इज 10 then the bat would be 110 rupees and the total price would be 120, not 110. Now thinking slow is more mature thinking. When you try to understand the problem, you go into all the details, and then you logically solve it. तो पहली बात हमें पता ये चली कि हम बहुत आम सा सौदा, 110 रुपए का सौदे का जवाब भी गलत दे सकते हैं अगर हमने पूरी डेलिब्रेशन नहीं की, हमने ठीक तरीके से सवाल को समझा हुआ। ठीक है, एज आई सेड इन द बिगिनिंग, दिस इज हाउ, ये तो एक छोटा सा सवाल था। आई टोल्ड यू दैट दिस इज द ओनली safeguard against reasoning ill is the habit of reasoning well. I hope you will not mind it, क्योंकि मैंने भी पहला जवाब इसका 10 रुपए दिया था। तो 10 रुपए को हम फलसफे की जुबान में कहते हैं रीजनिंग इल, बिकॉज यू डिडंट, योर आंसर इज नॉट करेक्ट, यू डिडंट थिंक अबाउट इट, यू डिडंट गो इनटू ऑल द डिटेल्स, तुमने एकदम से जवाब दे दिया। I familiarize you with the principles of correct reasoning, and I said, look, this cannot be 10 rupees, it is 5 rupees, and then the mathematical, we solve it mathematically. This is the problem, the main problem. You have 20 minutes to solve it. I hope all of you have pen and pencils and other things.
solve this problem, read it very carefully. It has all the relevant information in it. I will read it for you people who have difficulty understanding English. I will explain this to them in Urdu. The employees of a small loan company are Mr. A, Mr. B, Mrs. C, Miss D, Mr. E and Miss F. एक छोटी सी लोन कंपनी है जिसमें ये 6 लोग काम करते हैं. इनके नाम है मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिसेस सी, मिस डी, मिस्टर ई एंड मिस एफ. The positions they occupy are manager, assistant manager, cashier, stenographer, teller, and clerk, though not necessarily in the order. इनकी ये जो पोजीशंस इस लोन कंपनी में इनके पास है वो क्या है? मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, कैशियर, स्टेनोग्राफर, टेलर एंड क्लर्क, दो नॉट नेसेसरली इन द ऑर्डर. द असिस्टेंट मैनेजर इज मैनेजर्स ग्रैंडसन. जो असिस्टेंट मैनेजर है वो मैनेजर का पोता है. द कैशियर स्टेनोग्राफर सन इन लॉ. कैशियर स्टेनोग्राफर का दामाद है, यानी कैशियर की शादी स्टेनोग्राफर की बेटी के साथ हुई है. Mr. A is a bachelor. Mr. A गैर शादीशुदा है. Mr. B is 20 years old. B सिर्फ 20 साल का है. Miss F is Teller's stepsister. Miss F Teller की सौतेली बहन है. And Mr. E is manager's neighbor. Mr. E मैनेजर का नेबर है. तुमने ये बताना है कि ये सारी पोजीशंस किस किस के पास है. अपने पास इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लें या मोबाइल पे इसकी पिक्चर ले लें और इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास 20 मिनट है. हमारे आने वाला सेशन mostly would revolve around this problem, because I would be giving you examples from this problem, that how we solve problems in our day-to-day life and in academia. आप लोगों को ये बताना है कि ये जो मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर की पोजीशंस हैं ये किसके पास है. मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ. द प्रॉब्लम इज that in a small loan company we have 6 employees. Their names are Mr. A, Mr. B, Mrs. C, Miss D, Mr. E, Miss F. ये इनके नाम है. जो पोजीशंस हैं इनके पास वो क्या है? मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, कैशियर, स्टेनोग्राफर, टेलर एंड क्लर्क. ये 6 पोजीशंस हैं जो कि इन 6 लोगों के पास है, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर. इसका मतलब ये है कि जरूरी नहीं कि मिस्टर ए जो है मैनेजर है, मिस्टर बी जो है वो असिस्टेंट मैनेजर है, ऐसा नहीं. इट इज नॉट रिस्पेक्टिवली. You have information which will help you solving this problem. The information are: number 1, the assistant manager is manager's grandson. जो भी इनमें assistant manager है वो manager का पोता है, grandson. The cashier is stenographer's son-in-law. Cashier stenographer का दामाद है. Mr. A is a bachelor. Mr. A ने शादी नहीं की. Mr. B is 20 years old. B सिर्फ 20 साल का है. Miss F is Teller's stepsister. Mr. E is manager's next door neighbor. Mr. E manager का. You have to tell that who holds each position. Who is the manager? Who is the assistant manager? For this you need copy, pencil, and a lot of thinking. You have 20 minutes to solve this problem.
अस्सलाम वालेकुम पार्टिसिपेंट्स। आपको आवाज आ रही है? जी, ये आपको जो है तो ये प्रॉब्लम दिया हुआ है, इसको सॉल्व करें तब तक आपको आवाज नहीं आएगी। ठीक है, आप इसमें जी आपको आवाज ठीक आ रही है? ठीक है, ये आपको एक प्रॉब्लम दिया गया है, इसको सॉल्व करें और तब तक जो है तो आप लोग ये जब सॉल्व करेंगे उसके बाद आपका सेशन कंटिन्यू होगा। और जिन्होंने कहा है कि ये रिलेटेबल नहीं है तो ये रिलेटेबल ही है, क्योंकि ये एनालिटिकल क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिटिकल स्किल्स है, और ये अगर आपको पता हो तो ये टेस्ट में आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। आप आप इसको सॉल्व करिए, अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो भी ठीक है, नहीं नहीं कर सकते तो आपको जो है तो पता चल जाएगा इसके बाद। जब तक आप लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे तो मेरा माइक म्यूट रहेगा। इसके बाद हम इस प्रॉब्लम को मिलके सॉल्व करेंगे, ठीक है? और थोड़ी देर में हम ये भी देख लेंगे कि ये एनालिटिकल क्रिटिकल थिंकिंग जो है एकेडेमिया में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। अगर आप रिसर्च कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं, तो इसमें इस क्रिटिकल एनालिटिकल थिंकिंग का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है? अभी मैं आपको बताऊंगा कि जब जिसको आप नॉलेज कहते हैं उसमें क्रिटिकल और लॉजिकल थिंकिंग का क्या रोल है। तो प्लीज सॉल्व दिस प्रॉब्लम। One of the participants, Ahmad Bhatti, has solved this problem.
मुनीबा फिदा, आप अपना जवाब जो है ना अपलोड कर दें। अगर आपने सॉल्व कर लिया तो प्लीज अपलोड योर आंसर इन द चैट बॉक्स।
अच्छा, हम इस सवाल की तरफ वापस आते हैं। काश हम फेस टू फेस होते और हम ये बात एक दूसरे के सामने करे होते। मुझे एक छोटे से सवाल का जवाब दें, आप चैट बॉक्स में लिखेंगे, हम नॉलेज किसको कहते हैं? We are all teachers and we claim that we give knowledge to people. But what is knowledge? My question is, we will come back to this question again. ठीक है? Thinking, information, past experience. Okay. Deep study, sharing positive. थैंक यू। बहुत सारे जवाब जो है ना हमारे पास आ गए। इंसान हमेशा से ये कोशिश कर रहा है कि वो नॉलेज को डिफाइन कर सके, so that when I claim that I have knowledge of something, what I should have. When I say that I have knowledge of, for example, this thing that water is H2O, and an ordinary person like me, if I claim that I know that water is H2O, and a chemist who is an expert of chemistry claims that water is H2O, what is the difference between us? ठीक है, तो इसके लिए मैं तुम्हें एक छोटी सी डेमोन्स्ट्रेशन, हम एक स्लाइड को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू आस्क समवन टू डिवाइड 16 by 64 and he promptly says that the answer is 1/4. Obviously the answer is correct. So can we say that he or she has knowledge? I repeat, you asked someone to divide 16 by 64 and he or she answered the question saying that if we divide 16 by 64, then the answer is 1/4. The answer is correct. The person knows the truth. Normally we say that knowledge is knowing the truth and obviously then imparting it with other people. But this is not, knowing the truth is not the thing. Even if you know the truth, you may not have knowledge. Okay? So this was explained by a philosopher whose name was Socrates. I hope you know Socrates. मुझे उम्मीद है कि तुम सुकरात को पहचानते होगे। सुकरात के ख्याल में दुरुस्त जवाब देना या सच को जानना नॉलेज नहीं। तो फिर नॉलेज क्या है? ये अगली स्लाइड प्लीज चेक। If you ask someone to divide 16 by 64 and he said 1/4, अगर तुमने उससे पूछा what is the logic of it? Explain it to me. You asked a critical question and you said, okay, your answer is correct, but what is the methodology? What is the method that you have used? तो उसने कहा कि 16 और 64 में 2 6s हैं, इन 6s को कैंसिल कर दें तो जवाब 1/4 आ जाए। अब आप देख सकते हैं कि जवाब दुरुस्त है। The logic is wrong. The method is wrong. I repeat again, you asked someone to divide 16 by 64 and he said 1/4. The answer was correct, but you still asked him, how do you come by this answer? Please explain the method that you have used to answer the question. And he said, don't you see 2 6s? Cancel the first 6 with the second 6. जवाब दुरुस्त है मगर तरीकाकार गलत है। जो कुछ आज हम पढ़ेंगे इसमें हम देखेंगे कि दुरुस्त जवाब तक पहुंचने के लिए ठीक तरीकाकार भी इस्तेमाल करना चाहिए। अब if you ask the same person to divide 25 by 53, so obviously he would say 2/3 because this time he will cancel 5 with 5. The answer is incorrect. जिससे हमें पता चलता है कि पहला जवाब by chance ठीक आ गया। If you ask the same person to divide 29 by 16, this time his or her logic is not working. His or her method is not working because there is nothing common. So Socratic definition of knowledge is justified true belief. You have knowledge of something when you have a belief. Your belief is true
and you have a right logic for it. You have a right justification for it. You have a right justification for it. So today we are focusing on the justification. If someone answers something, or if someone makes an argument, you listen to the argument. The conclusion may be right, but he or she should be using right logic for it. So today's session would be on this. हम उस सवाल को सॉल्व करते हैं. ये जो 2 स्लाइड्स हैं, मैं इनको समराइज कर दूं तुम लोगों के लिए. मैंने ये बताया कि एक बहुत बड़ा इशू है कि नॉलेज क्या चीज. तो उसके लिए आई गिव यू एन एग्जांपल. It demonstrates that knowing truth is not knowledge. If you know the truth about something and you don't have any justification for your truth, then you can say at the most you have an information, a right information. But you cannot claim knowledge, because you have knowledge of something when you have a belief, your belief is true, and you can justify your belief. You have a right logic for it. Now, why having right logic is important? Having right logic is important because if your logic is not right, if your methodology is not right, then you can hit the truth by chance, but you would not be able to hit the truth consistently. For example, अगर रोड पे रेड लाइट ऑन हो गई और 3 लोग जो है 3 गाड़ियां खड़ी हो गई, तो हम क्या ये समझें कि ये सारे के सारे बहुत कानून के पाबंद लोग हैं? हम उस वक्त तक नहीं समझ सकते जब तक हम उनसे ये ना पूछें कि ये क्यों खड़े हुए, इन वजह क्या है. You ask the first person why did he stop, and he says, don't you see the police wala? If I break the signal, the police will find me. तुमने पहले बंदे से पूछा कि तुम क्यों खड़े हुए रेड लाइट पे, तो उसका जवाब ये था कि सामने पुलिस वाला खड़ा है, अगर मैं सिग्नल तोड़ूंगा तो ये पुलिस मुझे फाइन करेगी. अब तुम सोचो कि अगर पुलिस वाला नहीं होगा तो क्या होगा. जाहिर बात है ये आदमी सिग्नल तोड़ देगा. तुम दूसरे से पूछो कि तुम क्यों खड़े हुए, और वो कहता है कि डोंट यू सी पीपल अराउंड मी, दखलक बस हुई, लोग क्या कहेंगे अगर मैं सिग्नल दूंगा, ये मेरी तरह उस्ताद है या कोई डॉक्टर है या वकील है या जज है. तो अगर कोई आसपास नहीं होगा तो ये आदमी भी सिग्नल तोड़ दे. You ask third person why did he stop, and he says don't you see the red signal? It says that it is not my turn, I should wait for my turn. Now this is the law abiding citizen. ये सिग्नल पे खड़ा रहेगा चाहे कोई इसको देख रहा है या नहीं देख, क्योंकि he understands that we should follow the signals. While driving, we should follow the signals. That is why Socrates and philosophers are very they are very interested in having right justifications. इसी तरह तुम जब थीसिस लिखते हो, तुम पीएचडी करते हो या एमफिल करते हो या रिसर्च आर्टिकल्स लिखते हो, तो तुम्हें बताना पड़ता है कि ये काम इस तरह है तो क्यों इस तरह है. That is why you give one full chapter to the idea of your methodology. You write one full chapter on methodology. तुम बताते हो कि इसका मेथड क्या होगा, ये चलेगा कैसे. तुम ट्रुथ को तो मालूम कर लोगे, और मगर ये ट्रुथ जस्टिफाई कैसे हो, जस्टिफाई कैसे होगा. जब हम नॉलेज का कहते हैं तो नॉलेज में कोई चीज सेक्रेड नहीं है, मुकद्दस नहीं, कोई चीज सीक्रेट नहीं है. इसका मतलब क्या हो गया, जब तुम पीएचडी थीसिस लिखते हो या एक आर्टिकल लिखते हो, तो यू गिव योर आर्टिकल और योर पीएचडी थीसिस टू योर सुपरवाइजर, and supervisor asks a lot of questions and you have to answer all the questions. Then your PhD thesis goes for refereeing. 2-3 रेफरी उसको चेक करते हैं. इसके बाद you face a public defense, जिसमें बहुत सारे लोग तुमसे सवाल जवाब करते हैं. तो जब knowledge का जब whenever you claim knowledge, you have to face questions, you have to face critical thinking, and whenever you have to accept an argument, you have to ask questions from the people. तुम्हें लोगों से सवाल करने पड़ते हैं. तो आज हम सवाल करना, जवाब देना, आर्गुमेंटेशन को सीख रहे हैं. जाहिर बात है हम एकेडेमिया में हैं, हमसे स्टूडेंट सवाल करते हैं. अपना थीसिस लिखते हो, तुम्हारे थीसिस के मतलब सवाल होते हैं. तो आज हम ये देख रहे हैं कि ये आर्ग्यूमेंट कैसे बिल्ड होती है, क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, एनालिटिकल. ये जो अभी तक हमने सवाल किए हैं ये एनालिटिकल रीजनिंग थे. लेट अस सॉल्व दिस प्रॉब्लम. आई विल राइट n if the idea is no. I will write y if the idea is yes. Okay. The question is
In a small loan company, we have 6 people, Mr. A, Mr. B, Mrs. C, Mr. D, Mr. E, and Miss F. The positions they occupy are manager, assistant manager, cashier, stenographer, teller, and clerk. हमारी जिंदगी के सारे मसाइल तकरीबन इसी तरह होता है, जिसमें हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिली भी होती है और उस इंफॉर्मेशन की मदद से हमें किसी कंक्लूजन तक पहुंचना पड़ता है. ठीक है. अब whenever you have a problem, the first thing that you need to do is to read it carefully. Whenever you have a problem in your day-to-day life, in academia, you are writing a paper, you are arguing with your boss, तुम अपनी जॉब, अपनी प्रमोशन के लिए आर्ग्यू कर रहे हो, तो सबसे पहला काम क्या है? तुम किसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट देने के लिए दूसरे बंदे से आर्ग्यू कर रहे हो या उसकी आर्ग्यूमेंट सुन रहे हो, तो सबसे पहला आइडिया ये है कि तमाम इंफॉर्मेशन को गौर से पढ़ें. अब जब हम इन इंफॉर्मेशन को गौर से पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है द असिस्टेंट मैनेजर इज मैनेजर्स ग्रैंडसन, द कैशियर इज स्टेनोग्राफर्स सन इन लॉ, Mr. A is a bachelor, Mr. B is just 20 years old, Miss F is teller's stepsister, and Mr. E is manager's neighbor. Now, the first information is assistant manager is manager's grandson. इसका मतलब है assistant manager is our son. आप देख रहे हैं असिस्टेंट मैनेजर के नीचे मिस्टर, मिसेस सी, मिस डी और मिस एफ के कॉलम में मैंने एन लगा दिए. They cannot be assistant managers. The reason is, the argument is because the reason is that assistant manager is a son. एक आदमी है, एक लड़का है. यही जुमला हमें एक और बात भी बताता है जो कि एक्सप्लिसिट नहीं है, और वो ये है कि मैनेजर हैज अ ग्रैंडसन. यानी इनमें से जो भी कोई मैनेजर होगा, he or she must be old enough that he or she has a grandson. If we understand this, then they cannot be managers. Why they cannot be managers? The reason is, the argument is, A is a bachelor, he cannot be someone's grandfather. B is just 20 years old, cannot be someone's grandfather even if he is married. Miss D is not married, cannot have a grandson. Miss F is not married, cannot have a grandson. And since Mr. E is manager's next door neighbor, so he cannot be the manager either because he is manager's neighbor. C is the manager. And if she is the manager, she is not other things. अब इन नो और यस को अगर आप गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. By understanding the first statement, we inferred 13 inferences. सिर्फ एक बात को समझने के बाद हमने 13 नताइज अखज़ किए. ये मैं उर्दू में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स कह रहे हैं कि हमें उर्दू में समझाएं. तो हमने जब पहली बात को समझा और इस बात को बाकी बातों के साथ कनेक्ट किया तो we inferred 13 inferences. इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि जब भी आप जिंदगी में कोई मसला फेस करें तो सबसे ज्यादा टाइम इंफॉर्मेशन को समझने में इस्तेमाल करें. अगर आपने इंफॉर्मेशन को समझने के बगैर कंक्लूजन ड्रॉ करने की कोशिश की तो अभी आप देखेंगे हम उसको एक फैलेसी कहते हैं. यू जंप्ड टू द कंक्लूजन. डू नॉट जंप टू द कंक्लूजन. कंक्लूजन की तरफ एकदम से छलांग लगा के ना चले जाए. ओके, अब हम दूसरा जुमला पढ़ते हैं. कैशियर इज स्टेनोग्राफर्स सन इन लॉ. कैशियर इज स्टेनोग्राफर्स सन इन लॉ. If cashier is stenographer's son-in-law, again, cashier is a son-in-law.
Cashier is a son-in-law. So if cashier is a son-in-law, then Miss D, Miss F, and Mr. A cannot be cashiers. They cannot be cashiers. The reason is that why they cannot be cashiers. A cannot be cashier because he is a bachelor and cashier is a son-in-law. Miss D cannot be cashier because she is the manager. Miss C cannot be cashier because she is the manager. Miss D cannot be cashier because she is a miss, she is not married. And cashier is a son and who is married. Same reason for Miss F. Miss F cannot be cashier because cashier is a son-in-law. The sentence also says that the stenographer has a son-in-law. Stenographer का एक son-in-law है. इसका मतलब क्या हो गया? Stenographer कोई इतना बड़ा आदमी या औरत है कि उसका दामाद है. Now A cannot be the stenographer because he is not married. B cannot be the stenographer because he is just 20 years old. D cannot be stenographer because she is not married. F cannot be stenographer because she's a miss, she's not married. Stenographer is E. If E is stenographer, then E is not rest of the things. अब तुम देखो कैशियर के नीचे सारे ऑप्शंस खत्म हो गए सिवाय बी के, तो बी इज द कैशियर. द सिस्टम हैज स्टार्टेड जनरेटिंग आंसर्स. ऑब्वियसली इसकी रिकॉर्डिंग तुम्हें मिल जाएगी, तुम इसकी रिकॉर्डिंग भी फिर देख सकते हो. असिस्टेंट मैनेजर के पास सारे ऑप्शंस खत्म हो गए हैं. ए इज द असिस्टेंट मैनेजर. जिन स्टूडेंट्स ने कॉपी पेस्ट करके जवाब दिया है, जिन पार्टिसिपेंट्स ने, अब वो भी सीख लें. Miss D and Miss F, one of them is teller and one of them is clerk. One of the information says that Miss F is teller's stepsister. If Miss F is teller's stepsister, she is not the teller, she is the clerk. And teller is Miss D. Problem is solved. What we have learned from this problem, that a problem which may appear to be very difficult, you can solve it by using the slow thinking, which I शुरू में बताया ना, thinking fast and thinking slow. By the way, thinking fast and slow is a book. मैं अभी उसका रेफरेंस आखिर में दे दूंगा, उसको तुम पढ़ लो, तुम्हारी जो है ना critical thinking skills बहुत improve हो जाएगी. So this is how we solve the problem. The first thing I told you, whenever you face a problem, give a lot of time to understanding it. Give a lot of, if you have 10 minutes to solve a problem, give 8 minutes to understand it. Once you understand it, you will be able to solve it quickly. Otherwise, you would be jumping to the conclusion, you would be inferring conclusions, and your conclusions can be correct by chance. मगर अगर तुमसे कोई पूछेगा कि तुम्हारा जवाब कैसे आया, तो you would not be able to answer it. हम अपनी प्रेजेंटेशन, अपना लेक्चर अभी से शुरू करते हैं, और अभी हमें समझ आ गया कि what we are up to. Logic and critical thinking, analytical thinking, इस अभी हमने क्या कहा था, हम शुरू में we will solve a problem. This problem will help us understanding different issues. Logic and critical thinking, analytical thinking, the actual idea is logic. What we learn in logic, the art of argumentation. Once you understand logic, you understand how to argue, how to talk, how to make a point, how to appreciate someone's argument, or how to say that your argument is not correct by using reasoning. हमारे पास अपनी बात को मनवाने का या किसी दूसरे की बात को रिजेक्ट करने के कई तरीके. उनमें से एक तरीका है इमोशनल ब्लैकमेल. दूसरा तरीका है फोर्स, तुम जोर से अपनी बात मानो. Civilized societies में civilized people do not use force,
They do not blackmail by using emotions. They argue. They talk to each other and present facts. Logic may be defined as a science that evaluate arguments. जिस लफ्ज को भी अंडरलाइन किया गया होगा सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए, उसकी डेफिनेशन आगे आ रही है. Logic is the study of methods and techniques used to differentiate good arguments reasoning from bad arguments reasoning. Training in logic and critical thinking enables us to develop the skills necessary to think correctly and clearly. Argument क्या है? मैं तुम्हें पहले argument की तरफ ले जाऊं और फिर हम an argument is a group or set of propositions, statements. मैंने statement को underline किया हुआ है, इसकी definition अभी हम बता देंगे. Every argument has premises and conclusion. So if you say that Mrs. C is the manager, the argument, or if you say that A is the manager and I say that your argument is not correct, then I will have to give a counter argument and I will say, look, manager has a grandson, which implies that manager must be a married person. Whereas A is a bachelor, since A is not married, so A cannot be the manager. This is my argument. A cannot be the manager is the conclusion. And other lines like A is a bachelor and manager has a grandson, therefore A cannot be the manager. So the first two lines, A is a bachelor and manager has a grandson, are the premises. Premises का मतलब है conclusion की support के लिए मैंने क्या दलाइल ली. ठीक है? So when I say logic may be defined as a science that evaluate arguments, whenever you tell someone that your point of view is correct or accept this point of view, you have to argue for it. एक PhD thesis एक बहुत बड़ी argument है. कोर्ट ऑफ लॉ में एक मुकदमा चल रहा है, वो भी एक आर्ग्यूमेंट. टेलीविजन पे तुम सारा दिन लोगों को आर्ग्यूमेंट करते हुए देखते हो. We students of philosophy believe that human beings are arguers. You argue all the day. You present arguments. People criticize your argument. You defend them. You listen to people's argument. And in order to accept them, you ask them questions. And finally, you accept or reject their arguments. So we argue all the day. इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो आज का हमारा सेशन है, ये ना सिर्फ एकेडेमिया में बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी तुम्हें बहुत काम देगा. और जब ये सेशन खत्म होगा तो तुम्हें इसकी यूटिलिटी के बारे में पता चलेगा that you will be able to judge your colleagues' arguments, you would be able to judge your own arguments, you would be able to judge your students' argument. टेलीविजन पे जो चल रहा है, पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट्स जो चल रही हैं, IMF के साथ जो ये बहुत सारी बातें, जंगें हो रही हैं, तुम्हें बहुत सारी बातों को समझने में मदद मिलेगी. दोबारा से, logic is the study of methods and techniques used to differentiate good arguments reasoning from bad arguments reasoning. Once you get training in logic and critical thinking, it enables us to develop the skills necessary to think correctly and clearly. ओके, हम आगे चलते हैं. ये हमने क्या कहा कि ट्रेनिंग इन लॉजिक एंड क्रिटिकल थिंकिंग enables us to develop skills necessary to think correctly and clearly. Moreover, you also understand the logical connection between ideas, statements and theories. हमने देखा कि जब हम वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे तो हमारी पहली स्टेटमेंट जो थी assistant manager is manager's grandson was connected to other statements like A is a bachelor, B is just 20 years old. Once we connected this idea with other ideas, we started making inferences. So logic helps you understand the connections between different ideas, how these 2 or 3 ideas are connected to each other and how we can make inferences. Secondly, you can identify, construct and evaluate argument. अगर कोई तुम्हारे साथ बात कर रहा है तो तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो कि what he or she is arguing for, what he or she is aiming at. इसकी बात का मकसद क्या है, ये क्या चीज इन्फर करवाना चाहता. You can construct arguments like since Miss F is a bachelor and manager has a grandson,
therefore Miss F cannot be the manager. So you can construct arguments. And if someone says that E is the manager, you can evaluate his arguments on the basis of the given information that E is manager's next door neighbor. So if he is the next door neighbor, then he cannot be the manager. So you can evaluate arguments. Similarly, you can detect inconsistencies, contradictions, and common errors. अगर मैंने कहा A manager है, तो तुम inconsistency का मतलब है you can connect it with rest of the statements and you can say that it is not consistent. इसमें रब्त नहीं है. जो participants उर्दू को समझते हैं, इसको हम कहते हैं रब्त नहीं है. इस एक बात के ट्रू होने से दूसरी बात गलत हो रही है. क्योंकि ए बैचलर है तो ए मैनेजर नहीं हो सकता, क्योंकि मैनेजर का ग्रैंडसन है. तो ये रब्त नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं. Then you can solve problem systematically. तुमने देखा हमने एक चार्ट बनाया और उस चार्ट के जरिए हमने प्रॉब्लम को सॉल्व किया. You can identify the relevance and importance of ideas. You have a system of information and you want to infer something. Then one important thing is to identify that these information are relevant and these information are not relevant to this idea. सबसे जो बड़ी बात है वो क्या है? रिफ्लेक्ट ऑन द जस्टिफिकेशंस ऑफ one's own ideas, theories, beliefs and values. इसका मतलब क्या है? मैं तुम्हें थोड़ा सा, ये अगर वीडियो तुम्हें नजर आ सक रही हो तो, मुझे नहीं पता कि अभी ये देख सकते हैं, अभी मुझे देख सकते हैं? अच्छा ठीक है. इसका मतलब क्या हो गया कि हमने टार्च जो है ना, हमारी सोच की टार्च हमने सारा वक्त लोगों पे की होती है कि वो फला ये कह रहा है, फला ये कह रहा है, फला ये कह रहा है, उसने ये बात गलत की है. रिफ्लेक्टिंग ऑन द जस्टिफिकेशंस ऑफ वन ओन्स आइडियाज, थ्योरीज, बिलीव्स एंड वैल्यूज का मतलब है वो जो टार्च तुमने सारा वक्त अपने से बाहर की तरफ की हुई है ना और बाहर की दुनिया को देख रहे हो. हम समझते हैं कि फलसफा पढ़ने की मेराज, कल्मिनेशन, लॉजिक एंड क्रिटिकल थिंकिंग कल्मिनेशन क्या है कि वो टार्च का रुख तुम अपनी तरफ कर देते and you start looking at your own self. You start seeing the justifications of your own ideas, beliefs, theories and values. तुम ये सोचना शुरू कर देते हो कि इस जगह तक जो मैं पहुंचा तो मैं कैसे पहुंचा. हम सुकरात को सबसे बड़ा wisest of all human beings. Why we say that Socrates was wisest of all human beings? The reason was Socrates reflected on his own ideas, beliefs and theories. And finally, he realized that I am ignorant. Why we say that Socrates was wisest of all human beings? Because Socrates was not ignorant of his ignorance. जब सुकरात ने ये टार्च का रुख अपनी तरफ किया तो उसको पता चला कि सुकरात जाहिल है. ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि Socrates is a symbol of wisdom. When Socrates reflected on the justifications of his own ideas, beliefs, theories, and values, he realized that I'm ignorant. So, why Socrates is the wisest of all human beings? Because Socrates was not ignorant of his ignorance. He was ignorant and he knew that he was ignorant. तुम लोगों को बात समझ आ गई? तो ये आखिरी बात है. आखिरी बात क्या हुई? हमने क्या सीखा कि तुम अपने आइडियाज, जस्टिफिकेशंस के बारे में सोचना शुरू करते हो. जो आज तक तुम लोगों के बारे में सोच रहे हो, तो तुम पहले अपने बारे में सोचते हो कि मैं ये जो आइडिया है मेरा, ये क्यों इस तरह. हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं. कैलिफोर्निया क्रिटिकल थिंकिंग डिस्पोजिशन इन्वेंट्री, ये एक बहुत बड़े सवालों जवाब के बाद एक इन्वेंट्री आई है जिसमें हमने ये देखा, इसको हम कैलिफोर्निया क्रिटिकल थिंकिंग डिस्पोजिशन इन्वेंट्री कहते हैं. इनके ख्याल में क्रिटिकल थिंकर्स की 7 आदत होती है. जो लोग नॉलेज की तलाश में होते हैं, ट्रुथ की तलाश में होते हैं, सच की तलाश में होते हैं, जो ये जानना चाहते हैं कि ठीक और गलत के दरमियान फर्क कैसे किया जाए, उन लोगों की 7 आदत, 7 हैबिट्स. पहली, ट्रुथ सीकिंग, जिसको हम कहते हैं तलाशिया. अब तुम सोचोगे कि हम तो सारे हक की तलाश में, हम हक की तलाश में नहीं. अगर तुम अपने बारे में, जैसे कि मैं जब अपने बारे में सोचता हूँ या
लोगों के बारे में देखोगे तो तुम ये देखोगे कि people make a point of view and then they defend their point of view. So if you are only defending your point of view, then you are not in search of truth. You are trying to find ways to defend your own point of view, your opinion. तुमने एक ओपिनियन बना लिया कि ये चीज ऐसे है और अब तुम उसी को डिफेंड करने में लगे हुए, उसका मतलब है तुम ट्रुथ सीकिंग नहीं कर रहे। ट्रुथ सीकिंग सीकर वो होता है जो अपने, जिसको समझ आ जाए कि मैं गलत हूं तो वो मान जाता है कि मैं गलत, क्योंकि he or she is not interested in justifying his own ideas or beliefs. He or she is interested in finding the truth. So do you try to understand things, how things really are? Are you interested in finding out the truth? If you can surrender your point of view, if your point of view has been proven wrong and you accept that it is wrong, then you are in search of truth. Otherwise, you are a person who is defending his point of view, who is defending his own opinion, and who is not in search of truth. Second thing, critical thinkers are open-minded people. Open-minded का मतलब है, how receptive are you to new ideas even though intuitively they do not agree with you? Do you give them a fair hearing? जो बातें तुम्हारे ख्यालात के बिल्कुल खिलाफ जा रही हैं, क्या तुमने कभी उनको गौर से सुना है? मिसाल के तौर पे मैंने एक पॉइंट ऑफ व्यू बना लिया कि फलान जो पार्टी है ना वो सबसे अच्छी पार्टी, तो क्या इसके खिलाफ मैंने कभी बात को गौर से सुना है? अगर मेरे लीडर के बारे में किसी ने सच बताया है तो क्या उस सच को मैंने एंटरटेन किया है? अगरचे कि मुझे बहुत बुरा लगा, मगर क्या मैंने उसको कभी गौर से सुना है? जो मेरे ख्यालात बने हैं, जो मेरे वैल्यू सिस्टम बना हुआ है, अगर उसके खिलाफ कोई बोल रहा है या उसके खिलाफ कोई आर्ग्यू कर रहा है तो क्या मैं उस आर्ग्यूमेंट को गौर से सुनता हूँ? एम आई ओपन माइंडेड? वो अरिस्टोटल कहता था, द मार्क ऑफ अ सिविलाइज्ड मैन एंड एजुकेटेड मैन इज दैट ही लिसन्स टू आइडियाज which are against his ideas, even if he doesn't accept them, but he or she listens to the ideas carefully. The third thing is analyticity. Do you try to understand the reasons behind things? क्या तुम, कोई चीज तुम्हारे इर्द गिर्द होती है तो तुम उसके बारे में जानने की कोशिश करते हो कि ये क्यों हुआ है? और जो तुमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बनाया हुआ है, अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू के खिलाफ भी कोई बात आती है तो क्या तुम उसको एंटरटेन करते हो? Do you act impulsively or do you evaluate the pros and cons of your decision? अगर कोई डिसीजन ले लिया तो वो डिसीजन इम्पल्सिवली होता है, एकदम से तुमने ठक करके ले लिया, या तुमने उसके ठीक उसको पूरा जज किया, इवेल्युएट किया. The fourth thing is systematicity. Are you systematic in your thinking? Do you break down a complex problems into parts and then move from these small parts to bigger parts? Confidence in reasoning. We are all very confident when we talk about something, but the thing is, where does this confidence comes from? Do you always defer to other people? How confident are you in your own judgment? Do you have reasons for your confidence? Do you have a way to evaluate your own thinking? जैसे कि मैंने शुरू में बताया. So if you're confident in your thinking, ask yourself, where does this confidence is coming from? If you are confident because we have data, if you are confident because you have facts, if you are confident because you have listened to other people and you entertained their point of view, if this is the case, then you are a critical thinker. But if you are confident because you are saying this, हम कहते हैं ना ये बात इसलिए ठीक है क्योंकि मैं कह रहा हूं इसलिए ठीक है. हम जब मोस्टली किसी बात को कहते हैं ठीक है तो अंडरलाइंग साइकोलॉजिकल स्टेट ये होती है क्योंकि मैं इसको कह रहा हूँ ठीक है. तो अगर तो ये है तो यू आर नॉट अ क्रिटिकल थिंकर. बट इफ यू थिंक दैट समथिंग इज राइट बिकॉज यू हैव डेटा, यू हैव इंफॉर्मेशन and you have a methodology, you have applied a methodology, and after applying the methodology, these are the results. So ye confidence, and you are also confident that if facts say something else, then you will be prepared to change your point of view. Curiosity. How curious you are. Curiosity का मतलब है I can do better. या मुझे और इल्म हासिल करना चाहिए, और इल्म हासिल करना चाहिए, जो मेरे पास है ये कम है, इससे ज्यादा बेहतर हो सकता है. तो क्या तुम्हारी क्यूरियोसिटी है?
और सबसे important बात, maturity of judgment. Do you jump to the conclusion? Do you try to see things from a different perspective? Do you take other people's experiences into account? You are a mature person when it comes to making judgment, when you do not jump to the conclusion. एकदम से तुम conclusion की तरफ jump नहीं लगाते, बल्कि आराम से सोच समझ के किसी conclusion. तो कैलिफोर्निया डिस्पोजिशन इन्वेंट्री के ख्याल में क्रिटिकल थिंकर की ये 7 आदत होती है. हम इनको दोबारा से देख लें. On the top is truth seeking. They seek truth. Seeking truth means that if your point of view is correct, you accept that it is correct. If you are ignorant like Socrates, you accept that I'm ignorant. You are open-minded, you listen to other people, you solve problems analytically, go into the details of all the things, you solve problems systematically. You are confident because you have data, not because you think that it is true. You are curious, tajassus hai tumhe. And you do not jump to the conclusion. You are a mature person. की टर्म्स कंटिन्यू कर रही हैं. हमने कहा था लॉजिक आर्ग्यूमेंट्स को जज करती है, और आर्ग्यूमेंट को मैंने डिफाइन कर दिया. एन आर्ग्यूमेंट इज अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स. I have underlined the word statement. We will see what a statement is. Every argument has one or more than one premises and a conclusion. कम से कम एक और ज्यादा से ज्यादा हजारों premises हो सकते हैं, जिसके बाद हम किसी नतीजे तक पहुंचते हैं. Argumentation involves the method of persuading or establishing for ourselves and for others that a proposition as the conclusion of an argument has adequate evidential support for its acceptance. ठीक है, मैंने references दिए हुए हैं, ये polygraph की definition है. Argumentation involves the method of persuading or establishing for ourselves and for others that a proposition as the conclusion of an argument has adequate evidential support. हमने देख लिया critical thinkers क्या करते हैं. जब वो किसी नतीजे तक पहुंचते हैं तो वो बताते हैं कि मेरे नतीजे को ये evidence से support करे. और ये सारी बातें स्टेटमेंट्स में होती हैं. अभी हम क्विकली समझने की कोशिश करेंगे कि स्टेटमेंट क्या है. ठीक है, मैं तुम्हें बिल्कुल पहले ओपनिंग रिमार्क दे दूं. A statement is a sentence that can be affirmed or denied. एक स्टेटमेंट एक ऐसा जुमला है जिसको affirm, yes it is true, deny, no it is false कहा जा सकता. All statements are sentences, but all sentences are not information. All statements are sentences, but all sentences are not statements. सारी की सारी statements जुमले हैं, sentences हैं, मगर सारे जुमले statements नहीं हैं. मिसाल के तौर पे I see white color and I say that I see a wall and the wall is white. And if I say the wall is black, everyone will say, no, it is not black, it is white. If I say it is white, everyone will say, yes, it is white. So a statement is a sentence that can be affirmed if it is true or can be denied if it is false. But if I say white color is the most beautiful color in the world, or I like white color, these are not statements. I'm expressing, I'm not telling you how the word is. I'm telling you how I feel about the word. It is raining will be true if it is raining and will be false if it is not raining. But I love rain. It is not a statement, it is a sentence, an expressive sentence, because I'm not telling you that how the word is. ये इसी स्लाइड पे है, ये इसी स्लाइड पे स्टेटमेंट्स मैं तुम्हें अलग से नहीं पढ़ा रहा हूं, बल्कि यही बता रहा हूं. तो स्टेटमेंट क्या हो गया? स्टेटमेंट वो जुमला हो गया जो कि अगर तो वो ट्रू है तो हम उसको कहते हैं ट्रू और फॉल्स है. और हमने ये देख लिया कि सारे जुमले स्टेटमेंट्स नहीं होते. स्टेटमेंट एक ऐसा जुमला होता है जिसकी ट्रुथ वैल्यू होती है 0 या 1, जिसको कंप्यूटर साइंस वाले कहते हैं, ट्रू या फॉल्स जिसको हम लोग कहते हैं. अब ये the question is, what makes a true statement true and what makes a false statement false? ठीक है, there is not a separate slide which explains this idea. So listen to this idea carefully. The question is, what makes a true statement true and a false statement false? We have two answers.
एक जिसको हम कहते हैं एनालिटिकल रीजनिंग, एनालिटिसिटी। अभी हमने देखा ना, मैंने बताया कि जब लॉजिक समझ आ जाए तो एनालिटिसिटी तुम्हें समझ आ जाती। एनालिटिसिटी का मतलब है अ स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स बाय वर्च्यू ऑफ द वर्ड्स व्हिच इट कंटेन। एक जुमले के सही या गलत होने का अंदाजा हमें उसको समझ के हो जाए तो हम कहते हैं ये जुमला एनालिटिक। ये जो तुमने प्रॉब्लम सॉल्व किया, इसको कोई लैब में एक्सपेरिमेंट नहीं किया, बल्कि जुमलों को समझने के बाद तुमने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया। अगर मैं तुम्हें कहूं कि अ बैचलर इज अ मैरिड मेल, तो तुम कहोगे सर बैचलर का मतलब होता है कंवारा, तो कंवारा कैन नॉट बी अ मैरिड, शादीशुदा, तो आपका जुमला गलत है। If I say a triangle has 4 angles, so you would say, sir, triangle means 3 angles. So how a triangle can have 4 angles? If I say I have seen colorless green ideas, so you would say, sir, green ideas, colorless, and ideas don't have colors. तो ये वो जुमले हैं जिनके गलत होने का अंदाजा सिर्फ इनको समझने के बाद। But if I say it is raining in Peshawar, so in order to see whether this sentence is true or false, you will have to collect more information. You will have to rely or depend on your 5 senses. Previously, you were relying on the understanding, reasoning. Now you are relying on the observation. क्योंकि it is raining, इस जुमले में इस पता नहीं चलता कि ये सच है या झूठ है। इसके लिए तुम्हें देखना पड़ेगा, अपने सेंसेस को इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो बास जुमलों के ठीक या गलत होने का अंदाजा सिर्फ रीजनिंग से, समझने से हो जाता है। बास जुमलों के ठीक या गलत होने का अंदाजा ऑब्जर्वेशन से होता है। तो हमने क्या कहा, एन आर्गुमेंट इज ए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स, premises and conclusion. Premises support the conclusion, and everything in an argument must be expressed in statements. अगर एक आर्ग्यूमेंट में ऐसे जुमले हैं जो कि स्टेटमेंट्स नहीं है, जिनके सच या गलत होने का फैसला नहीं किया जा सकता, तो then it is not an argument. The argument is fallacious. The word is fallacious. It is committing a fallacy. It has an error in it. और आगे चल के ये बात तुम्हें और भी ज्यादा अच्छी एक्सप्लेन हो जाएगी। अगर किसी आर्ग्यूमेंट में ऐसे जुमले हैं जिनके सच या झूठ का तयन नहीं किया जा सकता, तो ऐसी आर्ग्यूमेंट इज नॉट अ गुड आर्ग्यूमेंट। अब अगर सच और झूठ का तयन नहीं किया जा सकता और वो एक हाइपोथेसिस है जिसके सच और झूठ का तयन किए जाने की कोशिश की जा रही है, तो फिर तो वो एक आर्ग्यूमेंट है। मगर अगर तुम कहो कि ये जुमला तुम जरूर मान लो बगैर सच और झूठ साबित किए बगैर, then it is not a correct argument. Then the thinking is not clear and it is not correct. And we will see the examples of this. एक बहुत बड़ा इशू हमारे सामने ये होता है कि डिडक्टिव और इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स क्या। ये अक्सर टीचर्स जो रिसर्च कर रहे होते हैं या करवा रहे होते हैं, तो उनसे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि ये डिडक्शन और इंडक्शन में या डिडक्टिव और इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स में क्या फर्क। हमारे पास एक रेडीमेड सा जवाब है कि डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स मूव फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर एंड इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स मूव फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। ठीक है, हम इस आइडिया को थोड़ा सा अपग्रेड करके करेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये this is true up to some extent, but it is not completely true. So let's try to understand the difference between deductive and inductive arguments. ठीक है, every argument claims that its premises support its conclusion. This is the claim of almost every argument. हर argument का, हर बहस मुबाहिसे में हमारा क्लेम ये होता है कि हमारे जो दलाइल है वो हमारे नतीजे को सपोर्ट करे। ठीक है, an argument which claims that its premises provide necessary grounds for its conclusion is deductive. मैं आराम आराम से तुम्हें इस कॉन्सेप्ट को समझा दूं। अगर कोई आर्ग्यूमेंट ये क्लेम करे कि उसके प्रेमिसेस ने, उसमें दलाइल इतने मुकम्मल हैं कि अब कंक्लूजन को एक्सेप्ट ना करना एक चॉइस नहीं है, यानी if the premises are true, the conclusion must be true, the argument is deductive. For example, if I say all men are mortal, सारे इंसान फानी हैं, Socrates is a man, सुकरात एक इंसान है,
therefore Socrates is mortal. Now, the argument is deductive because if all men are mortal and Socrates is a man, then Socrates must be mortal. If A is equal to B and B is equal to C, then if I infer a conclusion that A is equal to C, then A must be equal to C, because I have all the reasons to believe that A is equal to C. The reason is that A is equal to B and B is equal to C. अब अगर तुमने एक ऐसी आर्ग्यूमेंट बनाई है जिसमें तुम्हारा क्लेम ये है कि तुमने सारा एविडेंस दे दिया, इररिफ्यूटेबल एविडेंस, और हमारा क्लेम क्या है, प्रोवाइडेड द प्रेमिसेस आर ट्रू द कंक्लूजन मस्ट बी ट्रू. इफ दिस इज द केस देन द आर्ग्यूमेंट इज डिडक्टिव. इंडक्टिव अदरवाइज. अब इंडक्टिव क्या है? An argument even in which even if the premises are true and the conclusion can still be false is an inductive argument. Inductive argument is based on mostly it is based on observation, and the observation is not complete. For example, I went to a place, for example, I went to a hotel and I had a bad experience. Now I'm telling you that don't go to that place or don't go to that hotel because you will also have a bad experience. You will have a bad experience. There is a probability. It is not necessary that you will also have a bad experience. पाकिस्तान इंडिया से आज मैच जीत गया तो अगला मैच जीत जाएगा की प्रोबेबिलिटी है, और ये प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाएगी अगर पाकिस्तान ने 5 मैच मुसलसल जीत लिए और अगला मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी, बट स्टिल इट वुड बी प्रोबेबल. ये सर्टेनिटी इसमें नहीं आ सकती. ठीक है, तो an inductive argument is a probable argument where premises do not provide conclusive grounds. The claim is not that premises are providing conclusive grounds. The claim is that premises are providing probable grounds. In case of deductive arguments, the claim is that premises are providing conclusive grounds. Conclusive grounds. If the claim is correct, the argument would be valid, invalid otherwise. मैं दोबारा से तुम्हें आराम से समझाता. In a deductive argument, the claim is that premises have provided conclusive grounds, complete grounds, in such a way that if the premises are true, the conclusion must be true. We have logical techniques to test the claim. If the claim turns out to be correct, we say the argument is valid, invalid otherwise. The claim is different in case of induction. In induction, the claim is that premises provide probable grounds. And we have several ways to increase or decrease the probability of an argument. मैंने तुम लोगों को शुरू में बता दिया था कि आज का जो सेशन है ये तुम्हें इस टॉपिक से इंट्रोड्यूस करवा देगा, और अगर खुदा करता है तुम्हारी इसमें दिलचस्पी पैदा हो जाती है तो तुम इसमें आगे भी पढ़ सकते हो. मेरा आखिर में मैं ईमेल दे दूंगा, मैं तुम्हें बुक्स भेज दूंगा, तुम वैसे खुद भी सर्च करके पढ़ सकते हो. मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उर्दू में भी एक्सप्लेन करूं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसको उर्दू में भी एक्सप्लेन करूं. तो ये हमारे पास की टर्म्स हो गई, डिडक्शन और इंडक्शन. अच्छा, अब खास बातें. Argument कब strong होती है? An argument is strong when premises are true and relevant to the conclusion. जब premises सच भी हों और ये conclusion के साथ relevant भी हों. Premises support your conclusion and not some other conclusion. दोनों बातों का एक ही मतलब है. यानी एक तो पहली बात तो क्या है, your premises must be true. The second thing is they must be relevant to the conclusion. So even if your premises are true, but they are not supporting your conclusion and they are supporting another conclusion, so the argument would not be strong. An argument is strong when premises are true and they are relevant to the conclusion, they are supporting your conclusion. हम बहुत सारी बहस और मुबाहिसा जब टीवी पे देखते हैं तो लोग सच बोल रहे होते हैं, मगर ये सच जो वो नतीजा निकाल रहे होते हैं उसके साथ इसका ताल्लुक नहीं होता. तो प्रेमिसेस का ताल्लुक कंक्लूजन के साथ होना चाहिए. इन केस ऑफ प्रोबेबल आर्ग्यूमेंट्स, इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स,
Conclusions should be modest. Modest का यहाँ पे हमारा मतलब है, अगर पाकिस्तान इंडिया से एक मैच जीता तो तुम कह सकते हो कि शायद पाकिस्तान अगला मैच जीत जाए. But if you say that now Pakistan will win all the matches, this is not a modest conclusion because you are exaggerating the facts out of proportion. So a good argument, inductive argument, an arguer does not exaggerate the facts out of proportion. So do not exaggerate the facts out of proportion. If you don't agree with an argument, do not reject the conclusion, reject the premises. अब हम थोड़ा सा criticism पे आ जाए. If you have some problems with an argument, if you think it is not correct, then never ever reject the conclusion, reject the premises on which the conclusion stands. Because if you reject the conclusion, there are many chances that you will make it popular. Negating the conclusion evokes it, it can make unpopular arguments popular. अगर तुमने सिर्फ conclusion को बार बार negate किया, तो इससे क्या हो जाएगा, ये argument ज्यादा पॉपुलर. मैं तुम्हारे साथ एक थॉट एक्सपेरिमेंट यानी एक तजर्बा करने वाला हूं, ठीक है. मुझे नहीं पता कि कितने पार्टिसिपेंट्स हैं, 652. इस तजर्बे में मैं सारे पार्टिसिपेंट्स वही सोचेंगे जो कि मैं चाहूं, ठीक है. और तुम इससे जान नहीं छुड़ा सकोगे. तो मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, डोंट थिंक ऑफ एन एलिफेंट. मेरी रिक्वेस्ट तुमसे क्या है, डू नॉट थिंक ऑफ एन एलिफेंट. अब तुम लोग क्या सोच रहे हो, you are thinking of an helicopter. If I ask you not to think of an elephant, you are thinking of an elephant. If I ask you not to think of an elephant today while having lunch, and if I repeat this 3-4 times, you will think of an elephant while having lunch. तुम्हारे दिमाग में जो पॉलिटिशियंस और ये जो ख्याल तुम्हारे दिमाग में प्लांट किए जाते हैं ना, ये निगेशन के जरिए. इसीलिए निगेशन को हमेशा बहुत ख्याल से इस्तेमाल करना चाहिए. When you negate something, you actually evoke it. The more you negate it, the more you evoke it. मैं तुम्हें ना थोड़ा लॉजिक से निकल के, थोड़ा सा इससे निकल के बात, कोई आदमी जिस चीज के खिलाफ बात कर रहा होगा ना, बहुत सारे चांसेस हैं कि वो चीज उसमें खुद पाई जाती है. एक झूठा लोगों को कहेगा झूठ मत बोलो, एक चोर लोगों को कहेगा कि चोरी नहीं करनी चाहिए. ठीक, ये थोड़ा सा साइकोलॉजी. जब तुम किसी चीज को किसी में तुम कह रहे होते ना कि ये बुरी है किसी आदमी में, तो वो चीज असल में तुम में है, क्योंकि अगर तुम में कोई बुराई नहीं है तो वो बुराई तुम्हें दूसरे में नजर नहीं आ सकती. इसकी मिसाल ये है कि एक बच्चा जिसमें चोरी की बुराई नहीं है, वो जाके किसी दुकान से कोई चीज भी उठा लेगा, क्योंकि उसको समझ ही नहीं है चोरी की. तो जब तक कोई बुराई तुम में नहीं पाई जाती, तुम वो बुराई किसी दूसरे में नहीं ढूंढ सकते. ठीक है. तो खैर, कमिंग बैक टू आर्ग्यूमेंटेशन, never ever reject the conclusions. If you think that an argument has a flaw, then you must reject the premises on which the argument stands, because if you reject the conclusion, there are many chances that you will evoke it. The more you reject a conclusion, वैसे ही जिंदगी में ना, अगर तुम्हारे पे कोई चोरी का इल्जाम लगा दे और तुमने चोरी वोरी नहीं की, तो there is no need of defending you, because the more you defend you, the more you will become a thief. People will start thinking that you're a thief. अगर तुमने कोई काम नहीं किया और कोई तुम पे इल्जाम लगा दे, तो do not defend it, क्योंकि तुम जितनी अपनी सफाइयां दोगे उतनी ज्यादा तुम इस मसले में फंसते जाओ. ठीक है. This is the last slide, or this is the last slide of the introduction. Arguments enable us to clarify our thoughts, articulate them accurately, and consider the ideas of others in a respectful and critical manner. Argumentation क्या करती है?
हमारे अपने अभी जितने तक हमने पढ़ लिया, हमारे अपने ख्यालात को थोड़ा क्लैरिफाई करती है, उनको आर्टिकुलेट करती है, and we start considering the ideas of others, and even if we have to critically appreciate them, we do this respectfully. So the important thing is that you respectfully criticize another person's idea. The purpose of an argument is to change people's point of view or to persuade people to act or behave in a particular manner. इसका इख्तिताम हम इस बात पे करते हैं कि argument can shape perceptions, thinking and actions. So you should be very careful when you accept an argument. That is why I told you in the beginning that we are going to discuss a very important thing today. मैं एक पार्टी को वोट नहीं देना चाहता मिसाल के तौर पे, और मैंने सोचा हुआ है कि ये फलां है, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। मेरे कुछ दोस्त मेरे साथ आर्ग्यू करते हैं कि नहीं, ये जैसे तुम सोच रहे हो ये ठीक नहीं है, और फाइनली मैं उनकी आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट कर लेता हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ? द आर्ग्यूमेंट हैज चेंज्ड माय परसेप्शन। मैंने जो आज तक सोचा हुआ था, इस आर्ग्यूमेंट ने उस परसेप्शन को चेंज कर दिया। जैसे ही मेरी परसेप्शन चेंज हुई, आई स्टार्टेड थिंकिंग इन अ डिफरेंट मैनर। मेरी सोच भी मुख्तलिफ हो गई। मेरी परसेप्शन ने और मेरे सोच ने, दे आर गोइंग टू शेप माई एक्शंस। मैंने सोचा था कि मैं इस पार्टी को वोट नहीं दूंगा, मैं अब इस पार्टी को वोट दूंगा। दिस इज द पावर ऑफ एन आर्ग्यूमेंट। व्हेन यू एक्सेप्ट एन आर्ग्यूमेंट, इट गोज इन योर हेड, it shapes your perceptions, it shapes your thinking, and finally it shapes your actions. इसीलिए हम आर्ग्यूमेंटेशन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि आर्ग्यूमेंटेशन से तुम्हारे ख्यालात बदलते हैं, तुम्हारी सोच बदलती है, तुम्हारे बातचीत का तरीका बदलता है, और फाइनली तुम्हारे एक्शंस यानी अमल भी बदल जाते हैं। ठीक है, मैं एक छोटी सी बात तुम्हें समझाऊंगा, और वो ये है कि हमारे जैसे माशरे में लोग आर्ग्यूमेंट में लड़ाई झगड़ा क्यों शुरू कर दिया? ठीक है, हम लोगों को तुमने देखा ना कि हम जैसे ही आर्ग्यूमेंट शुरू होती है ना, चाहे घर में आर्ग्यूमेंट शुरू होती है, कहीं पे भी आर्ग्यूमेंट शुरू होती है, तो हम फौरन लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं। ठीक है, हम ये देखेंगे कि हम लड़ाई झगड़ा क्यों शुरू करते हैं, मगर हम एक छोटा सा प्रॉब्लम पहले सॉल्व करेंगे, ताकि तुम लोगों का तुम्हारी नींद जो है ना वो चली जाए। हम आमने सामने होते तो हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते, मगर हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जिससे तुम जो है ना दोबारा से जाग जाओ। तुम लोगों के पास 5 से 10 मिनट है इस कोड को खोलने के लिए। ठीक है, सामने सारा कुछ लिखा हुआ है। A number lock has 3 digits key. Hint of these 3 digits given can be given. Can you crack the code? 5 कोड्स तुम्हारे सामने दिए हुए हैं, जैसे कि पहला है 682। इस 682 में से सिर्फ एक नंबर ठीक है, और वो ठीक जगह पे लगा हुआ है। यानी अगर वो 6 है तो वो ठीक जगह लगा हुआ है, अगर वो 8 है तो वो ठीक जगह लगा हुआ है, और अगर 2 है। फिर दूसरा कोड दिया हुआ है 614। इसमें सिर्फ एक नंबर करेक्ट है, मगर वो रॉन्ग प्लेस्ड है। सपोज अगर वो 4 है तो वो गलत जगह लगा हुआ है, अगर वो 6 है तो गलत जगह लगा हुआ है। फिर 2 नंबर्स आर करेक्ट बट रॉन्ग प्लेस्ड। 2 और 6 में से 2 नंबर ठीक है, मगर वो गलत जगह लगे हुए। 738 में से कुछ भी ठीक नहीं है। 780 में से एक नंबर करेक्ट है, रॉन्ग प्लेस्ड।
You will not take 2 hours, you will take only few minutes to crack the code.
अच्छा, हम थोड़ी सी देर के लिए डिस्कनेक्ट हो गए थे। जो मैं जब तक देख रहा था तो फारूक अली, तो मेरे पास जो ठीक जवाब दिए हैं लोगों ने, जरूरी नहीं कि मैं सारे लोगों को देख सकूं, क्योंकि एक वक्त में बहुत सारे जवाब आ रहे होते हैं और आखिर में कॉपी पेस्ट भी शुरू हो जाता है। उस्मान गनी साहब ने तो कोई 10-12 टाइम्स करेक्ट आंसर शेयर किया है। मुनीबा फिदा, सैयद आरिफ हुसैन, उस्मान गनी, इशफाक, अहमद शुएब, हबीबुल्लाह, रुबीना, शाहिद नवाज, मिसबाउल्लाह, फारूक, और भी ढेर सारे लोगों ने सही जवाब दिए। और अब ज्यादा लोग चुके देने लगे। सादिया इम्तियाज का जवाब आ गया, वो भी 042 है। साइमा का जवाब आ गया, वो भी 042 है। कादिर नवाज का जवाब 042 है। द करेक्ट आंसर इज 042। इसका ठीक जवाब है 042। अब ये कैसे ठीक जवाब है, मैं आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ। पहले जो लाइन में लिखा हुआ है कि वन नंबर इज करेक्ट एंड वेल प्लेस्ड, ठीक है। कोड में हमारे पास ये तीन, 1 2 3, इस खाने को हम कह सकते हैं राइट मोस्ट, इसको हम कह सकते हैं लेफ्ट मोस्ट, एंड इट इज इन द मिडिल। सो राइट, लेफ्ट, मिडिल। वन नंबर इज करेक्ट एंड वेल प्लेस्ड। द कोड इज 082। इन 082 ओनली वन नंबर इज करेक्ट एंड वेल प्लेस्ड। हमें नहीं पता कि ये 6 है, 8 है या 2 है। मैंने पहले बताया था कि हमें सारी इंफॉर्मेशन को, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन को पढ़ना होता है। फिर है 614, वन नंबर इज करेक्ट एंड बट रॉन्ग प्लेस। एकदम से मुझे समझ आ गया कि ये नंबर 6 तो नहीं हो सकता, क्योंकि 6 जहां पे था अभी दोबारा भी वहीं पे है। और ये कह रहा है, पहली लाइन में कह रहा है वन नंबर इज करेक्ट एंड वेल प्लेस्ड। अगर तो ये 6 होता तो वन नंबर इज करेक्ट बट रॉन्ग प्लेस, तो ये दूसरी लाइन में ये ना लिखा हो। तो 6 इज आउट ऑफ द रेस। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, 80-90% of the students have written 6. Thank you. ये कौन कैंसिल कर रहा है? ठीक है, तो 6 जो है हमारी दौड़ में से बाहर चला गया। तो अब पहली लाइन में भी 6 चला गया, दूसरी लाइन में भी 6 चला गया, तीसरी लाइन में भी 6 चला गया। ये मैं करना चाहता था मगर ये इन्होंने, अच्छा प्लीज स्क्रीन को खराब ना करें। मैं खुद ही जो है ना ये करता हूँ, और जिससे आपको समझ आ जाएगा कि ये कैसे करना है। मैं स्क्रीन जब शेयर करूँ, हाँ, उस जब शेयर करूँ न्यूज। हाँ, annotation box अच्छा, यहाँ पे more disable annotation box और ये सारे एक मिनट, ये डिसेबल इन्विटेशन कर देते हैं। हम्म, ठीक। अब मैं खुद तो इस्तेमाल कर सकता हूँ एनोटेशन।
ओके, दोबारा से वापस आ गए क्योंकि बहुत सारे लोग उस पर लिखना शुरू कर दिया था. तो वन नंबर इज करेक्ट एंड वेल प्लेस्ड. तो आई एक्सप्लेन दैट 6 इज आउट ऑफ द रेस because had it been 6, the first line says one number is correct and well placed. If it is 6, then the second line cannot say that one number is correct but wrong place. So 6 is out of the race. I said read carefully. When we reach to the fourth line, it says that in the third line, two numbers are correct and well placed, wrong placed, 2 or 0. In the fourth line, it says nothing is correct. 7, 3, 8, nothing is correct. So wherever you find 7, 3, and 8, cancel them. Now in the first line, we are left with 2. Then one number is correct in the second line, but wrong place. We don't know whether the number is 1 or 4. So it is clear that one of them is right, but we don't know which number is correct. So we leave it for a while and we will come back to the second line. We know that one number is correct. Either that number is 1 or it is 4, but it is wrong placed. We go to the third line that says two numbers are correct but wrong placed. One of them is 2. It is correct but wrong placed, and we know that it should be placed here. It is on the right. 0 is also correct because 6 has already been eliminated. So 0 is also correct, but it is wrong placed. Now listen carefully. 0 cannot stay here because although it is correct, but this is not the place. 0 cannot come here because this place has been occupied by 2. So this is 0. Now go back to line number 2. It says one number is correct, but wrong placed. The number cannot be 1 because it is wrong placed. It is not in the middle. But right and left places have been occupied by 0 and 2. So it cannot go to right, it cannot go to left, it cannot stay in the middle, so the number is correct. So the correct number is 4. 042 is the code. And I have explained it to you. ठीक है participants, we have a 30 minutes break. हम break के बाद मिलते हैं 11:30 पे दोबारा ज्वाइन करें.
अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। हम एक मिनट में शुरू करें इसको, क्योंकि हमारे पास 519 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो वी विल स्टार्ट इन 2 minutes। अच्छा, ब्रेक से पहले हमने ये देखा कि आर्ग्यूमेंट्स क्या करती हैं, और हमें ये अंदाजा हुआ कि व्हेन यू एक्सेप्ट एन आर्ग्यूमेंट इट चेंजेस अ लॉट ऑफ थिंग्स, इट शेप्स अ लॉट ऑफ थिंग्स। So we should be very careful when we accept an argument. You should be critical. By critical, I don't mean that you should be criticizing everything. Critical means appreciating things on the basis of facts and making informed judgments. Yani your judgment should be an informed judgment. Okay. Another thing that we should also discuss, that why we fight, or why we finally start abusive language when we have arguments at our homes or with our colleagues, or when you have a table talk, and what is the reason for this? You will have to understand a concept. The concept is metaphor. There may be many participants from English literature or from linguistics background. Normally, we think that a metaphor is, we use metaphors for beautification of language, or for giving, for making our sentences beautiful. But this is not the case. According to modern philosophers, most of our concepts are metaphorical in nature. So let me explain what is a metaphor. What is the new idea of a metaphor? A metaphor is understanding one thing in terms of another thing. हम लोग जिंदगी गुजारते गुजारते बहुत कम चीजों को ठीक तरीके से समझ सकते हैं, बाकी चीजों को हम मेटाफोर्स में समझते हैं. For example, life, we don't normally understand what is life. So we understand life in terms of a journey. So you have Rahbar, you have Rahnuma, you have Hamsafar in Zindagi, you have Rahzan. Similarly, we also understand life in terms of a person. हम कहते हैं ना, जिंदगी ने मुझे क्या दिया. इसी तरह टाइम है, टाइम को हम, we understand time in terms of a precious thing. For example, if I ask you to make few sentences about time, so most probably you will write, don't waste my time, budget your time carefully, I have given you enough time, no more time for you, spend your time carefully, you are wasting your time. तो ये सारी बातें पैसे के लिए या किसी प्रेशियस चीज के लिए. मैंने और मेरे एक स्टूडेंट ने पश्तो जुबान में जिंदगी के लिए 21 मेटाफोर्स आइडेंटिफाई किए, जिसमें जिंदगी को हम एक तस्वीर भी समझते हैं, जिंदगी को हम एक सफर भी समझते हैं, जिंदगी को हम एक इंसान भी समझते हैं, जिंदगी को हम एक कहानी भी समझते हैं.
और इसी तरह एक और स्टूडेंट के साथ एमफिल के काम में मैंने और मेरे दूसरे स्टूडेंट ने, हमने लव के लिए, प्यार के लिए पश्तो जुबान में 19 मेटाफोर्स आइडेंटिफाई किए हैं, जिसमें बहुत इंटरेस्टिंग ये है कि लव इज ए क्राइम। तुम शायरी में सुनते हो ना, प्यार को एक जुर्म समझा जाता है, प्यार को एक सफर समझा जाता है, प्यार को एक कहानी समझा जाता है, एक खूबसूरत तस्वीर समझा जाता है, समंदर समझा जाता है, वार्मथ समझा जाता है। मेटाफोर्स हमारे कॉन्सेप्ट्स को शेप करते हैं बहुत। Unfortunately, in our society, the metaphor for an argument is war. So whenever you find yourself having an argument with another person, you think that as if you are in war with the person. That is why we are more interested in winning or losing. We are not interested in truth. The basic purpose of an argument is to make progress and to find the truth. But in our society, instead of making progress and finding the truth, when we have an argument with the person, we think as if there is a war going on. That is why we attack arguments. We defend arguments. People having a different point of view are our enemies. We start considering them as our enemies. We think that our friends should support us irrespective of truth. Whether your statement is true or false, you think that your friends should support you. This is what happens in a war. And we think that a criticism is right when it is right on target. ये हमारे दरमियान, बहस और मुबाहिसे के दरमियान सबसे बड़ी रुकावट है। जब भी हम किसी के साथ बहस में जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अभी एक जंग शुरू हो गई, और इस जंग में जो मेरे दोस्त होंगे वो irrespective of my point of view, they should support me. They are supposed to support me. And if someone is not supporting my point of view, then we start considering him or her as our enemy. And we try to defend our point of view. When we start defending our point of view, there are little chances that you will find the truth, because you are now more interested in winning or losing. तो मैंने बताया, जबकि आर्ग्यूमेंट का असल पर्पस, जैसे कि मैंने बताया, कॉल पॉपर एक बहुत बड़ा फिलोसोफर ऑफ साइंस है, उसका ख्याल था कि आर्ग्यूमेंट का असल पर्पस जो है वो प्रोग्रेस करना है, वो ट्रूथ तक पहुंचना है। जीतना और हारना, जीत सच की होनी चाहिए, ना कि आपकी होनी चाहिए। तो दिस इज द प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ विच व्हेनेवर वी हैव एन आर्ग्यूमेंट विद अ पर्सन, वी सी पीपल फाइटिंग विद ईच अदर यूजिंग अब्यूजिव लैंग्वेज। आप फेसबुक पे देखते हैं, आप मीडिया में लोगों को देखते हैं, लोग आर्ग्यूमेंट को जीतने की कोशिश करते हैं बजाय इसकी कि वो प्रोग्रेस करें। ओके, दिस इज द लास्ट सेक्शन। लास्ट से मेरी मुराद ये नहीं है कि ये जल्दी खत्म हो जाएगा, इसको हम अच्छे तरीके से समझेंगे। हम आने वाला जो टाइम है, वी विल सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑफ एनालिटिकल रीजनिंग, and we will also try to learn some techniques of critical thinking. So I'm introducing you people with the term fallacy. Fallacy is an error in reasoning. Fallacy is type of an argument that may seem to be correct, but that proves on examination not to be so. That proves on logical examination. It cannot pass the test of critical thinking. तो fallacy भी एक argument है, मगर एक ऐसी argument जिसमें reasoning ठीक नहीं है। मैं तुम लोगों को एक दो छोटी सी बातें बता दूं। When you speak a sentence, in philosophy we say that you have performed an act. So a sentence basically is an expression of thought. You express a thought in a sentence. In an argument, you have many thoughts that are connected to each other, and you finally make a judgment, make a conclusion. So if there is an error in the reasoning process, it will also occur in the argument. अगर रीजनिंग का प्रोसेस ठीक नहीं था, या फ्लॉड था, या मैनिपुलेटिव था, या इमोशनली ब्लैकमेल था, so if there is an error in the reasoning, the error will also occur in the argument. An argument is an expression of reasoning. A sentence is an expression of thought. When you say a sentence, you express a thought. When you make an argument, you express the process of reasoning in it. So if there is an error in the reasoning process, it will also occur in the argument. सबसे बड़ी
फैलेसी की सबसे जो बड़ी बुनियाद है वो है जुबान. अब all factories are plants. It's a true statement. Our plants are things that contain chlorophyll. It is also a true statement. But from this, if we infer all factories are things that contain chlorophyll, the conclusion is wrong. The reason is the word plant has been used in two different senses in the premises. In the first premise, all factories are plants. Plants here means a unit. All plants are things that contain a chlorophyll. In the second sentence, we are using the same word, but now the sense is different. The meaning is different. अब दूसरे जुमले में प्लांट का मतलब है पौधा. इसका मतलब क्या हो गया कि प्लांट एक एम्बिगुअस वर्ड है. एम्बिगुअस का मतलब है इसके एक से ज्यादा मतलब. जुबान के ये जो दो बड़े मसले हैं जिसको मैंने नीचे लिखा हुआ है, एम्बिग्विटी एंड वेगनेस, they are the most because of these two things we see flaws in argumentation. So whenever you find ambiguous words or vague words, you should ask for definitions or you should ask for clarity. मिसाल के तौर पे vagueness का मतलब है when the boundary line of a word are not clear. If someone asks you to do more, you should ask him or her how much more. Give me a number. Give more, give me a number. Do your best, small, large. अगर तुमसे पॉलिटिशियन कहते हैं ना बहुत जल्दी बिजली आ जाएगी, तो जल्दी का इस जुमले का कोई मतलब भी नहीं. जल्दी की कोई बाउंड्री लाइंस नहीं है. तुम्हारे ख्याल में जल्दी शायद 3 महीने है, पॉलिटिशियन के ख्याल में जल्दी शायद 3 साल है. तो यू शुड आस्क फॉर व्हाट डू यू मीन बाय जल्दी बिजली आ जाए. अगर तुम्हें कोई कहे कि do your best, so you should ask me what do you mean by do your best. What should I do that you will start thinking that I'm doing my best. So you should ask for numbers. इसको हम कहते हैं साइंसी जुबान. In scientific language, the first thing that you have to do is to avoid ambiguity when you are making arguments, or ask for definitions if someone is using ambiguous words. Similarly, you should avoid vague words. Vague words are not clear. They do not have any boundary lines. And you should also ask for definitions if someone is using vague words. Read this argument carefully, and then we will move to how to examine or how to critically examine an argument. चला गया. Animal experimentation reduces our respect for life. If we don't respect life, we are likely to be more and more tolerant of violent acts like war and murder. Soon our society will become a battlefield in which everyone constantly fears for their lives. It will be the end of civilization. To prevent this terrible consequence, we should make animal experimentation illegal right now. ठीक है. मैं इसको जिन पार्टिसिपेंट्स को अंग्रेजी में थोड़ा सा मसला है, मैं उनके लिए ट्रांसलेट कर देता हूँ. Animal experimentation reduces our respect for life. Opening statement of the argument. Argument इस जुमले से शुरू होती है कि जानवरों पे तजर्बात जो है हमारी जिंदगी की जो रिस्पेक्ट है उसको रिड्यूस कर देता है, उसको कम कर देता है, जिंदगी की कदर को कम कर देता है. If we don't respect life, we are likely to be more and more tolerant of violent acts like war and murder. अगर हम जिंदगी को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो हम जंगों पे और खून खराबे पे चले जाएंगे, जिसकी वजह से सोसाइटी एक जंग का समा पेश करना शुरू कर देगी और हर एक किसी को अपनी जिंदगी का खौफ होगा. इससे सिविलाइजेशन को खतरा है. सिविलाइजेशन खत्म हो सकती है. तो इस सिविलाइजेशन के खतरे के कॉन्सिक्वेंस को कम करने के लिए हमें एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन को इलीगल यानी गैर कानूनी करार देना चाहिए.
आप देखने में तो ये बहुत अच्छी आर्ग्यूमेंट है, बहुत इट मेक सेंस कि अगर हम जिंदगी को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो हम जंगों पे चले जाएंगे, जिंदगी लेना लोगों की शुरू कर देंगे, हर एक किसी को अपनी जिंदगी का खतरा होगा, सिविलाइजेशन को खतरा हो जाएगा। जरा अब आगे चलते हैं और इस आर्ग्यूमेंट की लॉजिकल फॉर्म देख लेते हैं। इन द ओपनिंग स्टेटमेंट इज एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन रिड्यूसेस आवर रिस्पेक्ट फॉर लाइफ। दरमियान में लाइंस में ऑथर को यह बताना चाहिए कि हाउ एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन रिड्यूसेस आवर रिस्पेक्ट फॉर लाइफ, so that we should make it illegal. The author, instead of explaining how animal experimentation reduces our respect for life, is telling us if we don't respect life. इसका मतलब है ऑथर ने जो बात कही है वो उसको साबित कर ही नहीं रहा। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि एक्स एक चोर है और आखिर में कहता हूं एक्स को सजा मिलनी चाहिए। दरमियान में मुझे ये बताना चाहिए कि एक्स कैसे एक चोर है। अगर मैं कहूँ चोर बहुत बुरे लोग होते हैं, चोरों ने मुल्क को तबाह कर दिया है, चोर अपने मुल्क को लूट के अपना पैसे बाहर भेज देते हैं, चोर वक्त आने पे लोगों की जान भी ले सकते हैं, चोर खतरनाक लोग हैं, चोरों को पॉलिटिशियन नहीं बनने देना चाहिए। मैंने ये साबित नहीं किया कि एक्स एक चोर है। ये साबित करने के बजाय एक्स एक चोर है, आई एम टॉकिंग अबाउट थेफ्ट एज अ क्राइम, whereas I should prove that X is a thief. Instead of proving that X is a thief, I am talking about theft as a crime. And in the end, I say that X should be punished. So this is what we call a fallacy. This is the error in reasoning. Instead of, if my opening statement is X is a thief, and if my conclusion is that X should be punished, in the middle, I should provide a proof that X is a thief, not that theft is a crime and theft is very bad thing and thieves are bad people and thieves have looted this country and thieves are putting their money in the foreign lands, and I didn't prove my point. इसको हम कहते हैं fallacy, to miss the point. आने वाली स्लाइड्स में मैं आपको कुछ fallacies बताऊंगा, मगर fallacies पे मेन कोर्स पे जाने से पहले हम एक वो करेंगे, एक एक्सरसाइज करेंगे। जो बड़ी बड़ी फैलिसीज हैं उनमें से पहली फैलिसी है affirming the consequent. For example, what do you think? Clouds imply rain or rain implies cloud? मैं चैट में तुम्हारा जवाब देखूं। तुम्हारे ख्याल में clouds imply rain ठीक है या rain implies cloud ठीक है? इन दोनों में से कौन सा जुमला ठीक है? Clouds imply rain or rain implies clouds? ठीक है, मुझे बहुत सारे जवाब आ गए। अब मैं तुम्हें इसको एक्सप्लेन करूं। मोस्ट ऑफ यू थिंक दैट क्लाउड्स एम्प्लॉय रेन इज राइट। क्लाउड्स एम्प्लॉय रेन इज रॉन्ग बेसिकली, बिकॉज नॉर्मली वी हैव क्लाउड्स बट वी डोंट हैव रेन। तो क्लाउड का होना बारिश के होने को जाहिर नहीं करता। बहुत सारे वक्त बादल होते हैं और वो बरसे बगैर चले जाते। रेन एम्प्लॉइज क्लाउड, जब भी बारिश हो रही होगी बादल जरूर हो। तो बारिश को देखकर तो मैं क्लाउड्स को एम्प्लॉय कर सकता हूं, मगर क्लाउड्स को देखकर मैं बारिश को एम्प्लॉय नहीं कर सकता। ठीक है, सो कीप दिस इन माइंड। इफ आई से इफ ए देन बी, so whenever I see A, I can infer B. If there is no petrol in the car won't start. So if there is no petrol in the car will not start. However, if I infer that if there is no petrol in the car, then the car won't start, and the car won't start, you cannot infer that there is no petrol in the car, because the car won't start because there can be so many other reasons. हो सकता है उसके प्लग खराब हो सकता है उसकी बैटरी डाउन हो सकता है उसमें कोई और मैकेनिकल मसला हो। तो अगर मैं कहूं इफ ए देन बी, एंड इफ आई सी ए आई कैन इन्फर बी, हाउएवर इफ आई सी बी आई कैन नॉट इन्फर ए। इसको हम कहते हैं affirming the consequent. The second is denying the antecedent. If clouds imply rain, if rain implies clouds, so if there are no clouds, you can infer that there is no rain. However, if there is no rain, you cannot infer that there are no clouds. If I'm in Islamabad, then I'm in Pakistan.
If I am not in Islamabad, it would be wrong to think that I am not in Pakistan. However, if I am not in Pakistan, I can infer that I am not in Islamabad. तो ये दो बातें जरूर याद रखें, क्योंकि आपके थीसिस की या आपके आर्गुमेंट की फाइनली शक्ल जो है इसी तरह बन जाती है, that A implies B. So if A is there, you can infer B, but if B is there, you cannot infer A. Denying the consequent antecedent, if A implies B, if A is not there, you cannot infer that B is also not there. However, if B is not there, you can infer that A is not there. मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ फायर implies oxygen. जहां भी आग होगी वहां पे ऑक्सीजन जरूर होगी. तो अगर किसी जगह आग नहीं है तो मैं ये इन्फर नहीं कर सकता कि वहां पे ऑक्सीजन नहीं है. हाँ, अगर किसी जगह ऑक्सीजन नहीं है तो मैं ये इन्फर कर सकता हूँ कि वहां पे आग नहीं है. हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और फिर हम जो है अगली स्लाइड्स की तरफ जाएंगे. दिस इज द प्रॉब्लम. आई होप यू कैन सी इट. इफ यू कैन सी इट, प्लीज राइट यस. थैंक यू. यू कैन सी द स्लाइड. थैंक यू वेरी मच. ये चार लोग हैं. अलोंसो, एक मिनट. मैं थोड़ा सा इसमें स्लाइड्स में ना एक छोटा सा पार्ट मिसिंग है. मैं वो आप लोगों को बोल देता हूँ. अलोंसो, रूडोल्फ, कर्ट एंड विलर्ड आर 4 क्रिएटिव आर्टिस्ट्स ऑफ ग्रेट टैलेंट. ये चार लोग हैं. अलोंसो, ये रूडोल्फ, दूसरा कर्ट, और चौथे का नाम है विलर्ड. ठीक है. ये चार आर्टिस्ट्स हैं. इनके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है और वो इंफॉर्मेशन ये है कि अलोंसो एंड रूडोल्फ वर इन द ऑडियंस द नाइट द. इनमें से एक डांसर है, एक राइटर है, एक पेंटर है और एक राइटर है. ठीक है. इनमें से एक जो है वो राइटर है, एक पेंटर है, एक डांसर है और एक सिंगर. ये मैं नीचे लिख रहा हूं ताकि वन इज राइटर, पेंटर, सिंगर. ये चार मैंने हाईलाइट कर दिए. ये चार इनके प्रोफेशन. ठीक है. अब ऊपर गिवन इंफॉर्मेशन है और वो क्या है कि अलोंसो एंड रूडोल्फ वर इन द ऑडियंस द नाइट द सिंगर मेड हिज डेब्यू ऑन द कॉन्सर्ट स्टेज. अलोंसो और रूडोल्फ ऑडियंस में बैठे हुए थे जब इनमें से जो सिंगर है उसने अपना पहला गाना स्टेज पे गाया. दूसरी इंफॉर्मेशन ये है कि कर्ट एंड राइटर हैव हैड देयर पोर्ट्रेट्स पेंटेड फ्रॉम लाइफ बाय द पेंटर. इनमें से जो पेंटर है उसके सामने कर्ट और राइटर उसके सामने बैठ के उन्होंने अपनी पेंटिंग्स बनवाई थी. जो इनमें से राइटर है उसने विलर्ड की बायोग्राफी लिखी थी जो कि बेस्ट सेलर थी. अब वही राइटर अलोंसो की बायोग्राफी लिखने की कोशिश कर रहा है. अलोंसो ने कभी रूडोल्फ के मुतालिक नहीं सुना. अलोंसो हैज नेवर हर्ड ऑफ रूडोल्फ का मतलब है अलोंसो कभी रूडोल्फ से नहीं मिला, कभी उसने इसके बारे में सुना ही नहीं. आपने ये बताना है व्हाट इज ईच मैन्स आर्टिस्टिक फील्ड. इनमें से राइटर कौन है, पेंटर कौन है और सिंगर कौन है और डांसर कौन. मैं दोबारा से आपको बता दूं, ये चार लोग अलोंसो, कर्ट, Rudolph, Kurt, and Willard are 4 creative artists of great talent. One of them is painter, one is writer, one is singer, and one is dancer. इनके बारे में जो हमें मालूमात हैं वो ये है कि Alonso and Rudolph were in the audience the night the singer made his debut on the concert stage. Both Kurt and the writer have had their portraits painted from life by the painter.
The writer whose biography of Willard was a bestseller is planning to write the biography of Alonzo. Alonzo has never heard of Rudolph. The question is, what is each man's artistic field? अब आप पहले की तरह इस तरह का एक चार्ट इस्तेमाल कर सकते हैं. There is no male and female distinction in this question. I'll repeat it for you. We have 4 creative artists of great talent. Their names are Alonzo, Rudolph, Kurt, and Willard. One of them is writer, one of them is painter, one of them is singer, and one of them is dancer, but we don't know who is who. The given information are Alonzo and Rudolph were in the audience the night the singer made his debut on the concert stage. Alonzo और Rudolph सामईन में बैठे हुए थे जब सिंगर ने अपना पहला गाना गाया, इनमें से जो भी सिंगर है. Both Kurt and the writer have had their portraits painted from life by the painter. Kurt और writer ने from life अपनी पेंटिंग्स पेंट करवाई हैं, पोर्ट्रेट्स पेंट करवाई हैं पेंटर से. इसका मतलब है पेंटर कर्ट को भी जानता है और राइटर को भी जानता है. The writer whose biography of Willard was a bestseller is planning to write the biography of Alonzo. इनमें से जो राइटर है उसने पहले विलर्ड की बायोग्राफी लिखी है, बायोग्राफी लिखी है और अब वो अलांजो की बायोग्राफी लिख रहा है. अलांजो हैज नेवर हर्ड ऑफ रूडोल्फ. अलांजो रूडोल्फ के मतलब कुछ भी नहीं जानता, उसने कभी उसको नहीं देखा है, ना उससे मिला है. What is each man's artistic field? You will have to think about this issue. It will take 15 minutes to solve this question, 15 to 20 minutes. ये जिन लोगों ने फौरन जवाब देना शुरू कर दिया, either they are jumping to the conclusion or they already know the answers. So please don't jump to the conclusion. This is the lesson that we have learned in this session. You will have to think about it. Okay. Yes, you should think. हाँ, ये किसी ने ठीक लिखा. आपने अभी तक जवाब मत शेयर करें, कम से कम 10-15 मिनट के बाद जवाब शेयर करें.
ठीक है, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया, मगर ये चैट इतनी तेजी से मूव कर रही होती है क्योंकि अभी इस वक्त हमारे पास है 628 to 29 participants, and most of them are writing their answers in the chat. So it is very difficult to read all the chat. Anyways, we are solving this question. Alonso and Rudolph were in the audience the night the singer made his debut on the concert stage. इसका मतलब क्या हो गया कि सिंगर की लाइन से अलोंजो और रूडोल्फ निकल गए। ठीक है, ये पहली इंफॉर्मेशन। Both Kurt and the writer have had their portraits painted from life by the painter. Kurt पेंटर नहीं है और कर्ट राइटर भी नहीं है, because both Kurt and the writer, they are two different people, have had their portraits painted from life by the painter. So Kurt is not a painter because he has had his portrait painted from life by the painter. He is not a writer either because writer, he was accompanied by the writer. So he is not the writer. Then it says the writer whose biography of Willard was a bestseller is planning to write the biography of Alonso. The writer, Willard is not the writer, writer is planning to write the biography of Alonso. So Alonso is also not the writer is Rudolph. If Rudolph is writer, then he is not rest of the things. यहां तक आके ये क्वेश्चन जो है ना रुक जाता है। Alonso has never heard of Rudolph. Now Rudolph is the writer. He has had his portrait painted from life by the painter. The information says Alonso has never heard of Rudolph. So Rudolph cannot be the painter, because if he was the painter, he must have heard of the writer, because the writer has had his portrait painted from life by the painter. अगर Alonso painter होता तो वो Rudolph को जरूर जानता, क्योंकि Rudolph is the writer and writer has had his portrait painted from life by the painter. इसका क्या मतलब हो गया कि Willard is the painter. If Willard is the painter, then he is not rest of the things. इसका मतलब क्या हो गया, सिंगर के पास सारे ऑप्शंस खत्म हो गए, कर्ट इज द सिंगर। इसका मतलब क्या हो गया, कर्ट इज नॉट द डांसर। डांसर के पास सारे ऑप्शंस खत्म हो गए, अलोंजो इज द डांसर। सो द राइट आंसर इज अलोंजो इज डांसर, विलर्ड इज पेंटर, कर्ट इज द सिंगर एंड राइटर इज रूडोल्फ। अभी बहुत सारे लोगों ने ये ठीक जवाब लिखा हुआ है, मैं सारे लोगों को नहीं पढ़ सकता क्योंकि चैट बहुत तेजी से मूव कर रही है, मुसलसल जवाब आ रहे हैं। मगर हाँ, किसी के दो ऑप्शन जब गलत हो जाते हैं तो इसका मतलब है एक ऑप्शन गलत हो जाता है यस, तो बाकी भी गलत हो जाते हैं। तो ये हमने इसको इस तरह सॉल्व किया। अभी अगेन व्हाट वी डिड वाज, it is an analytical reasoning problem. We didn't do any physical experiment. We didn't do any observation. What we did was we saw what are the information. We read the information very carefully. Then we connected one information with the other information, and finally we arrived at the conclusions. हम अपनी main presentation पे आगे जाते हैं। ये आने वाले जो हमारा सेशन है, इसमें हम कुछ बड़ी बड़ी फैलिसीज पढ़ेंगे जो कि हम रोजाना की बहस मुबाहिसा में करते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं ये सारा काम जल्दी खत्म कर लूं ताकि हम क्वेश्चन आंसर पे जा सकें। ठीक है, I told you familiarity with the principles of correct reasoning in the beginning. I told you that today's session would revolve around principles of correct reasoning, familiarizing ourselves with the principles of correct reasoning. Once we familiarize ourselves with the principles of correct reasoning, we can apply them in our day-to-day life, in our research, in academia, in our jobs, wherever we are making decisions. So these principles will help you a lot in making informed decisions. The first fallacy is
we call it fallacy of false generalizations. Now we know what is a fallacy. Fallacy is an argument that may seem to be correct, but when you logically examine it, it turns out to be a bad argument, an incorrect argument. For an incorrect argument, we use the word fallacy. The first fallacy is fallacy of a generalization. We know that whenever we write a paper or do our research work, write a PhD thesis or MPhil thesis, we finally generalize it. जो भी हमारी फाइंडिंग्स होती है हम साइंस में उसको जनरलाइज करते हैं. जनरलाइजेशन में दो बातों का ख्याल करना चाहिए. नंबर वन, fallacy of accident is committed when an arguer moves carelessly from a generalization to a particular case which is special in character. मिसाल के तौर पे चोरी करना कानूनी जुर्म है, ये एक जनरलाइजेशन है. किसी को मारना जुर्म है, ट्रैफिक लॉस को ओबे करना चाहिए, ये जनरलाइजेशन है. मगर एक एम्बुलेंस को ट्रैफिक लॉ को ओबे नहीं करना चाहिए क्योंकि एक एम्बुलेंस एक स्पेशल सर्कमस्टेंस, एक आम गाड़ी नहीं. अगर कोई आपके घर में दीवार फलांग के आ जाए और आप समझते हैं कि ये जो है मुझे लूट लेगा या और घर की जो है ना मेरी इज्जत को खतरा है, तो ये एक आम इंसान नहीं है, ये एक आम गेस्ट नहीं है, ये एक चोर या डाकू है. इसके साथ डील करने का प्रोसीजर कानून से मुख्तलिफ होगा. कानून तो कहता है कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, मारना नहीं चाहिए, मगर ये एक आम गेस्ट नहीं है, ये दीवार फलांग के आए. ठीक है. अगर आप रिसर्च करें और आप डेटा कलेक्ट करें टैक्सेशन का, और एक इलाके को फ्लड ने मारा हुआ है, फ्लड आया है वहां पे, या कोई बहुत बड़ी बीमारी गुजरी हुई है, या वॉर एंड टेरर का शिकार रहा है, तो ये एक आम इलाका नहीं है, इसके लिए टैक्स के कानून मुख्तलिफ हों. एक स्टूडेंट ने छुट्टी की है मगर वो कल को अपना मेडिकल सर्टिफिकेट लेके आ गया है और जो कि ये बता रहा है कि ये हॉस्पिटल में था, ये एक आम छुट्टी करने वाला बच्चा नहीं है, ये एक स्पेशल केस. इसका मतलब क्या हो गया? whenever you apply a generalization on a case, you should see if the case is special, you should treat it differently. Special cases, we should treat them differently because they are not normal cases. So this is fallacy of accident. The other fallacy is fallacy of converse accident. You cannot make generalizations from special cases. हॉस्पिटल का जो डेटा आपने कलेक्ट किया जिसमें लोगों को ड्रग्स इस्तेमाल करने की इजाजत है, ये डेटा जनरलाइज नहीं हो सकता. एम्बुलेंस जिसको ट्रैफिक कानून तोड़ने की इजाजत है, ये डेटा जनरलाइज नहीं हो सकता. किसी ने अगर अपने दिफा में फायर किया था तो ये केस जनरलाइज नहीं हो सकता. किसी जगह टैक्स की छूट इसलिए दी गई थी क्योंकि वहां पे फ्लड था या वॉर थी, तो ये सूबा या ये कस्बा या इस शहर का डेटा जनरलाइज नहीं किया जा सकता. So you should be very careful when you move from generalization to special cases, and you should also be very careful when you make generalization from particular cases. If a particular case is special, you cannot apply generalization on it. Similarly, if a case is special, you cannot make a generalization from it. मैंने एग्जाम्पल्स थोड़ी सी सादा सी एग्जाम्पल्स दी है नाइव, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए. My father smoked 4 packs of cigarettes a day since age 14 and lived until age 69. Therefore, smoking really can't be that bad for you. It's एक आदमी को देकर आप इतनी बड़ी जनरलाइजेशन नहीं बना सकते. किसी गांव में आप दाखिल हुए और उसमें पहले आदमी ने आपको धोखा दिया, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये सारा गांव धोखा देने वाला. Mr. A belongs to a group G. A is a plagiarist, therefore all members of the group G are plagiarists. A अगर plagiarist है और वो जिन लोगों के साथ बैठता है तो जरूरी नहीं कि वो सारे के सारे plagiarist, और अगर उसमें बहुत सारे लोग plagiarist है तो जरूरी नहीं कि एक plagiarist. Individual cases, so you should see them individually. दूसरी बड़ी fallacy है argument against man. Remember, whenever there is an argument, there is an arguer too. The first lesson of logic is when you have to see an argument, judge the argument, not the arguer. If arguer's personal character, his special circumstances, his tribe, his affiliations,
his gender. If all these things have nothing to do with the argument, do not take them into account. I repeat. मैं उर्दू में बता दूं क्योंकि बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स का ये ख्याल है कि हमें उर्दू में भी बात करनी चाहिए. अगर जब भी एक आर्ग्यूमेंट बहस व मुबाहिसा होता है और आपको उस बहस व मुबाहिसे के नताइज को देखना है, तो आर्ग्यूअर यानी जो बहस कर रहा है उसकी जात में जाने की अगर जरूरत नहीं है तो ना जाए. उसके स्पेशल सर्कमस्टेंसेस यानी उसका जेंडर, उसकी पॉलिटिकल एफिलिएशन, उसके रिलीजन, अगर इन सब बातों का आर्ग्यूमेंट के साथ ताल्लुक नहीं है तो डू नॉट टेक देम इनटू अकाउंट. You cannot reject an argument on the basis of the arguer. Similarly, you cannot accept the argument on the basis of the arguer. वो हजरत अली का कौल है, मत देखो कि कौन कह रहा है, ये देखो कि क्या कह रहा है. ये लॉजिक का हमारा बिल्कुल पहला असूल है कि हम इन किसी भी आर्ग्यूअर की जातियात में जाए बगैर आर्ग्यूमेंट को जज करें. अगर जात का आर्ग्यूमेंट के साथ, मिसाल के तौर पे आपने किसी को पार्लियामेंट में भेजना है तो आप जरूर देखें कि उसको लॉ मेकिंग आती है कि नहीं, वो ईमानदार है कि नहीं, क्योंकि वो आपके लिए कानून बनाएगा. तो यहाँ पे जात को देखने की जरूरत है. मगर अगर एक मैथ्स की या केमिस्ट्री की आर्ग्यूमेंट है या एक आर्ग्यूमेंट का जात के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तो ऐसी जगहों पे जात को बीच में लाने की, आर्ग्यूअर की जात को लाने की कोई जरूरत नहीं. पहला सबक है आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट मैन अब्यूजिव. When personal character of an argument that has nothing to do with the argument is taken into account, the argument commits fallacy of argument against man abusive. If the personal character of an argument has nothing to do with the argument, do not take it into account. When the second argument is argument against man circumstantial. If special circumstances of an arguer, like his gender, his political affiliations, religion, whether he's liberal or not, whether he's Pakistani or Indian or American or Bangladeshi, if all these things have nothing to do with the argument, do not take them into account. You two are two wrongs make a right. जैसे ही आप किसी पॉलिटिकल लीडर को कहते हैं ना कि तुमने करप्शन किया, तो वो एकदम से कहता है दूसरे लोग भी करप्शन करें. इसको हम कहते हैं two wrongs don't make a right. You too is a fallacy which is committed when you reject the argument criticism by turning the argument criticism back against the opponent. It is very effective fallacy because it puts the arguer opponent on defensive. मैं तुम्हें एक ऐसी मिसाल देता हूँ, जरा गौर से सुनना. For example, if I make an argument against smoking, and if I give you all the data and I have references to research journals, and if I am referring to medical scientists who, after a lot of researches, claim that smoking is bad for health. And I give you this argument and it has all the data. And after the argument, I start smoking. So should you not accept my argument? You cannot reject my argument because I am a smoker. You can reject my argument by giving counter data, by giving counter examples. इसको हम कहते हैं you too. My argument against smoking and I am a smoker are two different things. You cannot reject my argument against smoking that has a lot of data because I am a smoker. अभी मेरे बहुत सारे डॉक्टर्स दोस्त हैं जो कि कैंसर के डॉक्टर्स हैं और वो खुद भी सिगरेट पीते हैं. तो मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या सिगरेट बुरी नहीं है? वो कहते हैं सिगरेट बहुत बुरी है और कैंसर बनने का एक वजह बन सकती है, और ये हम पे भी इक्वली अप्लाई होता है ये प्रिंसिपल जितना कि बाकी लोगों. सबसे खतरनाक argument against man है poisoning the well. You make an argument, you know that there are potential critics, and you say only a fool or a kafir or a foreign agent will not accept my argument. इसको हम कहते हैं poisoning the well. मैंने एक argument बनाई और मुझे पता है कि ये argument criticize हो जाएगी, तो मैं कहूँ कि एक बेवकूफ ही मेरी बात नहीं समझेगा, या एक इनफिडल, एक गैर मजहबी इंसान ही मेरी बात नहीं मानेगा, या मेरी बात ना मानने वाला फॉरेन एजेंट होगा, यहूदी लाबी से होगा या दूसरे मुल्क का एजेंट होगा. Arguments cannot be rejected. Counter arguments or criticism should not be rejected like this. If you have
a problem with the critic, then you should explain him or her that your argument is right and why it is right. However, if you say that whoever will not accept my argument would be a fool, or only a fool will not understand my point of view, or only a foreign agent will not accept my point of view, so these are fallacies and these should be avoided. Dr. Ali has argued that smoking is responsible for the majority of health problems in the country and that every smoker concerned about his or her health should quit. Unfortunately, however, we must reject Dr. Ali's argument. Only yesterday I saw none other but Dr. Ali himself smoking a cigar. मैं इसकी एग्जांपल दे चुका हूं आप लोगों को. अगली हमारी जो फैलेसी है वो है कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन. कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन लगता तो एक बहुत मासूम सा सवाल है, मगर इस सवाल में एक हिडन एजेंडा होता है. आर्ग्यूअर बायस्ड होता है, उसने पहले से प्रिज्यूम किया होता है कुछ बातों को, और वो एक सवाल तुमसे पूछता है जिस सवाल का जवाब ऐसा लगता है कि यस या नो है, मगर जैसे यस या नो में आप सवाल का जवाब देते हैं, the purpose of the question is to trap you. For example, if I ask you, have you stopped beating your wife, or have you stopped betraying your friends? Where did you hide the stolen money? When will you stop violations of merit? These are all complex questions. Agar main puchu, have you stopped cheating in examinations? Even if you say yes, it proves that you are a cheater. इतनी जो तरक्की तुमने किया ये एग्जामिनेशन में चीट कर करके किए. Have you stopped beating your wife? Even if you say yes, इससे ये साबित हो गया कि previously you used to do this. Where did you hide the stolen money? इसमें presumption ये है कि तुम चोर हो. When will you stop violations of merit? Presumption पहले से जो बात तय कर ली गई है बगैर सबूत के वो ये है कि तुम merit को violate करते हो. So these are complex questions. A complex question is like a iceberg. Iceberg, you can see only 1/10 of the iceberg, but you cannot see the rest of the iceberg, the main part of the iceberg. In a complex question, you see a very innocent question, but this innocent question has an agenda in it. It has a presumption in it. So you should be very careful when you answer complex questions. They are not simple yes-no questions. They need explanations. Similarly, when you're writing, you're doing research, you should avoid complex questions in your questionnaires. फॉल्स डिलेमा, और ये दो फैलिसीज हैं, फॉल्स कंप्रोमाइज और फॉल्स डिलेमा. हम इन तक पहुंचने के लिए पहले आर का मतलब समझ लें. देख इसके दरमियान आर लिखा है ना. आर एक एम्बिगुअस लफ्ज है और इसके बहुत सारे मतलब. लॉजिक में हम इसके दो बड़े मतलब स्कॉलर्स को या जो खास तौर पे जो लोग डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर रहे होते हैं उनको हम सिखाते हैं. इससे हमें डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने में भी बहुत मदद मिलती है व्हेन वी अंडरस्टैंड द लॉजिकल टू डिफरेंट लॉजिक्स ऑफ लॉजिकल मीनिंग ऑफ आर. वन काइंड ऑफ आर इज ए इज इक्वल टू बी और ए इज नॉट इक्वल टू बी. अगर हम पहली पोजीशन को एक्स कहें और दूसरी को वाई कहें तो एक्स और वाई एक साथ सही नहीं हो सकते, एक्स और वाई एक साथ गलत भी नहीं हो सकते. अगर एक्स ठीक हो जाएगा तो वाई गलत होगा जरूर. अगर एक्स गलत हो जाएगा तो वाई ठीक होगा जरूर ठीक होगा. इसी तरह अगर वाई सच है तो एक्स जरूर झूठ है, और अगर वाई गलत है तो एक्स जरूर ठीक है. अगर एक्स की वैल्यू नहीं पता तो वाई की वैल्यू भी नहीं पता. मैं दोबारा से बताऊं. A is equal to B or A is not equal to B cannot be true together, cannot be false together. If the first one is right, the second one is necessarily wrong. If the first one is wrong, the second one is necessarily right. If the value of the first one is not known, the value of the second one is also not known. We call these positions contradictory positions. Now come to the second. Today is Tuesday or today is Friday. If today is Tuesday is right, today is Friday would be wrong. If today is Friday is right, today is Tuesday would be wrong. But they both will be wrong if today is Wednesday.
So they cannot be true together, but they can be false together. मैं उर्दू में भी समझा दूं. टुडे इज ट्यूसडे, आज मंगल है. अगर ये बात ठीक है तो आज जुमा है, गलत हो जाएगा. अगर आज जुमा है तो आज मंगल होना गलत हो जाएगा. मगर आज बुध है तो ये दोनों बातें गलत हो जाएगी. ये बात पहली वाली पोजीशन में नहीं थी. पहली पोजीशन ना ठीक एक साथ हो सकते हैं ना गलत एक साथ हो सकते हैं. जबकि टुडे इज ट्यूसडे एंड टुडे इज फ्राइडे, बोथ वुड बी रॉन्ग इफ टुडे इज वेडनेसडे. तीसरी पोजीशन, मैं एक क्लास लेके निकला एंड आई थॉट दैट सम स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, और एक और टीचर भी क्लास लेके निकला और उसका ये ख्याल है कि सम स्टूडेंट्स आर नॉट इंटेलिजेंट. We both will be right if some are intelligent and some are not intelligent. ये बात पहली दोनों बातों में नहीं हो सकती थी. वो दोनों, पहली वाला जो A is equal to B, ना सही, ना दोनों साथ ठीक हो सकते हैं, ना दोनों साथ गलत हो सकते हैं. Today is Tuesday, today is Friday, दोनों साथ गलत हो सकते हैं, दोनों साथ ठीक नहीं हो सकते. और ये जो तीसरी पोजीशन है, इसमें ये दोनों साथ एक साथ ठीक हो सकते हैं. अगर तो आधे स्टूडेंट इंटेलिजेंट है, आधे इंटेलिजेंट नहीं है, कुछ इंटेलिजेंट है, कुछ इंटेलिजेंट नहीं है, तो ये दोनों बातें ठीक हो जाएंगी. False dilemma. It is committed when an arguer offers an incomplete range of alternatives, normally two, in such a way that it appears as if they are mutually exclusive. A is not equal to B and A is equal to B are mutually exclusive. They exclude each other. The fallacy is committed when two choices are not mutually exclusive, but you present them as if they are mutually exclusive. The nations of the world will decide either they are with us or they are with terrorists. Commits this fallacy. ठीक है, मैं तुम लोगों को बता दूं, मेरी पीएचडी लॉजिक और लैंग्वेज पे है, और मैंने जंग के दौरान, वॉर एंड टेरर के दौरान जो लैंग्वेज और लॉजिक का मिसयूज था, मेरी सारी रिसर्च उस पे और इसी पे आर्टिकल भी है. फॉर एग्जाम्पल, ये जो तुम्हारे सामने ये मैंने एग्जाम्पल दी, इस पे मेरा पूरा एक आर्टिकल है, इसका नाम है फॉल्स आइदर आर. तो ये चॉइस दी गई थी दुनिया की अकवाम को कि ये या तो वो अमेरिका के साथ हो जाएंगे या वो टेररिस्ट के साथ होंगे. तो दिस इज अ फैलेसी. It is not the case that if you are not with us, you must be against us. You can be neutral, you can be indifferent. पिछले दिनों हमारे एक पॉलिटिकल लीडर ने भी ये कहा था कि अगर वो उसके साथ नहीं है तो वो evil के साथ, which was fallacious. If someone is not with you, it is not necessary that he or she is with evil or he or she is with terrorists. He or she may be indifferent or may belong to another party. So if two choices are not mutually exclusive and you present them as if they are mutually exclusive, you commit fallacy of false dilemma. You either, Mr. Support Ali for president, or you don't believe in democracy, is a fallacy. दूसरी fallacy है fallacy of false compromise. Fallacy of false compromise आसान अल्फाज में A is not equal to B और A is equal to B के दरमियान में कोई रास्ता नहीं है. अगर तुम कोई रास्ता तलाश कर रहे हो तो you commit fallacy of false compromise. It is committed when we assume that an intermediate position between two extreme positions is always necessarily the correct choice. If no middle ground exists and you are looking for a middle ground, then you are committing fallacy of false choice. So false dilemma is committed when middle ground or other choices exists, but you do not offer them. False compromise is committed when no middle ground exists and you look for a middle ground. ये fallacies बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि अक्सर हमारा फैसला साजी में, अगर हम कहीं पे फैसला साजी करें तो हम समझते हैं कि या ये ठीक है या वो ठीक है. अक्सर ये होता है कि वो दोनों गलत होते हैं और कोई तीसरी पोजीशन ठीक होती है, या अक्सर ये होता है कि वो दोनों ठीक होते हैं मगर वो एक ही रियलिटी को दो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख रहे हो. हमारी नेक्स्ट फैलेसी है begging the question. Begging the question is committed in two different ways. The first one is when premises and conclusions say the same thing, only the language is different. हम इसको कहते हैं arguing in circles. उर्दू में मैं बता दूं, जब premises यानी दलाइल
एंड कंक्लूजन, नतीजा एक ही बात कर रहे हैं मगर इनकी जुबान मुख्तलिफ है। रेसलिंग इज डेंजरस बिकॉज इट इज अनसेफ। Dangerous and unsafe say the same thing. Jogging is fun because it is enjoyable. Fun और enjoyable का एक ही मतलब है। Happiness is the highest good for a human being since all other values are inferior to it. ये दो जुमले एक ही बात कर रहे हैं, सिर्फ जुबान का फर्क है। जो ज्यादा बड़ी फैलेसी है बेगिंग द क्वेश्चन की, वो रिसर्च में या और जगहों पे आती है जहां पे फैक्ट्स के ऊपर बात की जा रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से since the present government is investing more money on higher education, therefore their education policy is better than the previous government's education policy. This argument commits a fallacy because the premise the present government is investing more money on higher education, therefore their education policy is better than the... First, you will have to prove that investing more money on higher education makes an education policy good. Because there are 3-4 levels of education: primary education, secondary education, higher education. So first you will have to prove that investing more money on higher education makes an education system good. Without proving this, you cannot make this conclusion that their education policy is better than the previous government's education policy. इसका मतलब क्या हो गया? अगर दलील को खुद सबूत की जरूरत है तो पहले आप दलील को साबित करें। अगर मैं कहूं कि this man is a killer because he has weapon of murder W, first you will have to prove that W is weapon of murder. If I say that if IMF give us loan, then economy will progress. First thing that you will have to prove is that taking loan from IMF makes an economic policy better. Without doing this, you cannot make these arguments. हमने शुरू में ये देखा था कि नॉलेज क्या है, और हमने नॉलेज की बहुत सारी डेफिनेशन है। हमने सुकरात की डेफिनेशन देखी थी जिसमें ये बताया गया था कि नॉलेज इज जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ। यू हैव नॉलेज ऑफ समथिंग, व्हेन यू हैव अ बिलीफ, योर बिलीफ इज ट्रू एंड यू कैन लॉजिकली जस्टिफाई इट। देयर इज अ मेथोडोलॉजी। नॉलेज कैसे हासिल होता है, इसकी 5 बड़ी सोर्सेज है। सबसे पहली सोर्स है इसकी रीजन, दूसरी सोर्स है इसकी सेंस एक्सपीरियंस, तीसरी बड़ी सोर्स है अथॉरिटी। ये जो एकेडेमिया में नॉलेज हासिल होता है, इसकी ये बड़ी सोर्सेज हैं: अकल, तजर्बा, ऑब्जर्वेशन यानी फैक्ट्स को देखना, और अथॉरिटी। अथॉरिटी इज अ सोर्स ऑफ नॉलेज। What is an authority? A person or a group of people who are competent in an area. For example, if I start talking about Sharia, I am a wrong authority because Sharia is not my area of expertise. If I start talking about Pakistan's foreign policy, I am committing a fallacy because I am not an expert of foreign policy. If I start writing medicine for you, I am committing a fallacy because I am not a medical doctor. अगर मुझे क्रिकेट टीम का चेयरमैन बना दिया गया, रॉन्ग अथॉरिटी, क्योंकि मैं फलसफा पढ़ाने का उस्ताद हूँ, फिलॉसफी पढ़ाता हूँ, लॉजिक, क्रिटिकल थिंकिंग पढ़ाता हूँ, मुझे क्रिकेट के बारे में नहीं पता, इसलिए मैं उसके बोर्ड का चेयरमैन नहीं बन सकता। क्या मैं अपने ही ग्रेड में पुलिस में कोई ऑफिसर बन सकता हूँ? नहीं, क्योंकि मेरी तरबियत पुलिस ऑफिसर की नहीं हुई। तो अगर मैं पुलिस ऑफिसर बन गया तो मैं वहां पे कुछ करने के बजाय बिगाड़ ज्यादा पैदा करूं। क्या पुलिस ऑफिसर को या आर्मी जनरल को यूनिवर्सिटी में प्रोफेसरी या वाइस चांसलरी दी जा सकती है? नहीं, क्योंकि वो किसी और एरिया में एक्सपर्ट है, वो फलसफा या कोई और चीज नहीं पढ़ा सकता क्योंकि ये एक्सपर्ट। अथॉरिटी इज अ सोर्स ऑफ नॉलेज, रॉन्ग अथॉरिटी इज अ फैलेसी। क्या मैं पाकिस्तान के ये जो फाइनेंस मिनिस्ट्री में कोई हेल्प कर सकता हूँ? नहीं, क्योंकि मैं फाइनेंस में ट्रेन नहीं हूँ। क्या फाइनेंस वाला आदमी आके लॉजिक पढ़ा सकता है? नहीं, क्योंकि वो लॉजिक में ट्रेन नहीं हुआ। अगर वो ट्रेनिंग ले ले तब पढ़ा सकता है। तो मैंने क्या बताया? सेंस एक्सपीरियंस एक सोर्स ऑफ नॉलेज है, रीजन इज अनदर सोर्स ऑफ नॉलेज, अथॉरिटी इज अनदर सोर्स ऑफ नॉलेज। अदर 2 सोर्सेज ऑफ नॉलेज ऑन द टॉप इज रेवलेशन, वही जहां इंसान
का इल्म खत्म हो जाता है, वहां से वही शुरू हो जाता है। वही एक सोर्स ऑफ नॉलेज। Another source of knowledge is intuition. बहुत प्रॉब्लमेटिक सोर्स है। इंट्यूशन में हम ये समझते हैं, जिसको हम वजदान भी कहते हैं, बहुत सारे इसके नाम। is a source of knowledge where a knower knows that he knows, but he cannot explain how he knows. So authority is a source of knowledge. Wrong authority is a fallacy. A wrong authority is a person who is not competent in an area, who is not trustworthy, or who is suffering from problem of forgetting, or who is not sane. Insane है अगर वो उस मतलब उसका ज़हनी तवाज़न ठीक नहीं है, तो वो एक रॉन्ग अथॉरिटी होगा। अगर वो एक एरिया में कॉम्पिटेंट नहीं है, तो वो रॉन्ग अथॉरिटी है। अगर वो ट्रस्टवर्दी नहीं है, तो रॉन्ग अथॉरिटी। ठीक है। So whenever you refer to a person or a group of people or a book or a website that is not competent in a particular area, and you are referring him or her or the whatever it is for something in which he or she is not competent, you commit fallacy of wrong authority. Wrong authority एक बहुत प्रॉब्लम को मल्टीप्लाई कर सकता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मुझे फाइनेंस दे दी जाए तो मैं मसले ज्यादा बढ़ा दूंगा, कम नहीं करूंगा। Our next fallacy is ignorance. It is committed when we argue that any claim X is true because no one has ever proved it false, or any claim X is false because it has never been proved true. If something has not been proved true, it is not necessarily false. If something has not been proved false, we cannot claim that it is true. No life exists on Mars. Teams of scientists have conducted exhaustive studies on the planet's surface and atmosphere, and no living organism have been found. तो अगर अभी तक कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं मिला, तो हम ये नहीं कह सकते कि लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती मार्स पे। हम एट द मोस्ट ये कह सकते हैं कि इट इज माय हाइपोथेसिस दैट नो लाइफ एग्जिस्ट्स ऑन मार्स। ये फेलिसी बहुत खराब शक्ल इख्तियार कर जाती है जब शिफ्टिंग द बर्डन ऑफ प्रूफ पे चले जाते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि I claim that no life exists on Mars. If you criticize me, I asked you to prove, okay, you prove that life exists on Mars. इसको हम कहते हैं shifting the burden of proof. Remember, I told you attacking the person is the first fallacy. हम इसको कहते हैं मत देखो कि कौन कह रहा है, ये देखो कि क्या कह रहा है। ये लॉजिक का पहला सबक है। अगर हम दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पे सबक को लाएं, तो ये लॉजिक का दूसरा सबक होगा कि the party who makes the claim has to prove it. Burden of proof cannot be shifted on the opponent or the critic. अगर किसी का ख्याल है कि X एक चोर है, तो वो साबित करेगा कि X एक चोर है। X cannot prove himself or herself innocent. You cannot ask X to prove himself or herself innocent. If this is your claim that X is a thief, then you have the burden of proof to prove that X is a thief. It cannot be shifted on the critic or on the opponent. हमेशा याद रखें कि जो क्लेम आप करेंगे उसका बारे सबूत आप पे है। बारे सबूत अपोनेंट या क्रिटिक पे नहीं शिफ्ट किया जा सकता। These are some fallacies of emotions. Emotions are not bad, but when you have to decide on the basis of reason and you have to decide something on scientific grounds, you should not be taken over by emotions. The first fallacy of emotion is appeal to force. When you say that accept my argument, otherwise you will face the music, otherwise you will face the consequences. लोगों को नताइज की का खतरा दिला के आप कोई बात उनसे नहीं मनवा सकते कि मेरी बात मानो वरना फिर तुम्हें नुकसान मिलेगा। किसी को नुकसान पहुंचाना इज नॉट अ रीजन टू बिलीव। अपील टू पिटी, किसी की सिंपैथी हासिल करके कोई बात मनवाना भी गलत है। अक्सर हम पेपर चेक कर रहे होते हैं तो उसके आखिर में लिखा होता है कि सर मैंने अगर ये एग्जाम पास ना किया तो मेरा बाप बहुत बीमार है, वो मर जाएगा और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। These are not reasons to believe. Popularity of something is not a reason to believe. If something is popular, it is not necessarily right. Fear is also not a reason to believe.
Flattery, खुशामद is also not a reason to believe. इस तरह की कोई 100 fallacies of emotions, ठीक है, हम सारी नहीं कर सकते. अगर किसी बात को अकल की बुनियाद पे जज करना है तो you should not be taken over by emotions. Otherwise, emotions are not bad. Our life, emotions make our life beautiful. मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि मैं आधा घंटा जल्दी खत्म कर लूं ताकि हम क्वेश्चन आंसर ले सकें. Red herring is committed when the arguer diverts the attention of the reader or listener by changing the subject to some totally different issue. Something intended to divert attention from the real problem or matter at hand. A misleading clue. मैं तुम्हें एग्जांपल दे दूं. अली और आमिर के दरमियान एक बहस हो रही है. अली का ख्याल है it is ethically wrong to do plagiarism, so you should stop doing it. If Amir asks, but what is ethics? Plagiarism का मतलब आप सब लोगों को आता है academic theft. हम जब एकेडेमिया में चोरी करते हैं हम उसको प्लेजरिज्म कहते हैं. अब जाहिर बात है चोरी एक क्राइम है, एथिकली रॉन्ग है. आमिर अगर एथिक्स पूछे अली से कि व्हाट इज अखलाकियात किसको कहते हैं, Ali should not entertain this question. If Ali entertains this question and he replies the study of principles that differentiate good actions from bad actions, then Amir will ask who makes these principles, and the discussion has been derailed. They are no more talking about Amir's plagiarism. Now they are talking about ethics. A small thing can derail the whole discussion. A good arguer always keep the argument on the track. अगर ट्रैक से आर्ग्यूमेंट को हटाने की कोशिश की जाए तो वो हमेशा उसको ट्रैक पे रखने की कोशिश करता है. क्योंकि अभी हम बहुत सारी मीटिंग्स अटेंड करते हैं जिनमें मेरा ख्याल होता है कि 20-25 मिनट में डिसीजन ले लेना चाहिए, मगर लोग मीटिंग के दौरान इशू पे आने के बजाय इधर उधर की बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं और घंटों 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 जाया हो जाते हैं और हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकते. उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि कोई बीच में एक बात कर देता है और उस बात पे लोग बात करना शुरू कर देते हैं एंड द डिस्कशन इज नो मोर ऑन द ट्रैक. डेफिनेशनल रिट्रीट मैं पहले बहुत फनी सी एग्जांपल दे दूं. आई एम नॉट एन एडिक्ट, मैं नशा नहीं करता. बी कहता है आई सॉ यू स्मोकिंग हैश लास्ट नाइट, मैंने कल तुम्हें चर्च पीते हुए देखा. तो ए आगे से कहता है ओ यू कैन नॉट कॉल हैश अ ड्रग, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर. Definition of hash or drug has been changed. हमारे एक पॉलिटिशियन जब लोन कोई हुकूमत लेती थी तो ये कहते थे लोन लेने से लोन लेना बहुत बुरी बात है. जब उन्होंने खुद लोन लेना शुरू किया तो वो कहते थे ये एक पैकेज. तो लोन की डेफिनेशन उन्होंने पैकेज रख दी थी. जब पहले डॉलर नीचे जाता था तो वो कहते थे ये मुल्क बहुत बड़े खसारे में चला गया. जब उनके दौरे हुकूमत में डॉलर नीचे जाना शुरू हुआ तो उन्होंने कहा ये एडजस्टमेंट हो रही. अब ये एक नहीं, तकरीबन सारे लोग ऐसे ही कहते हैं. इसको हम कहते हैं डेफिनेशन ट्री, प्लेइंग विद द वर्ड्स. This fallacy is committed when an arguer changes the meaning of words in order to deal with objections raised against the original wording. So, in academia, you should be very careful about the definitional retreat. If you have started using a word in one sense, then you should keep on using the same word in the same sense. This is the last fallacy, and with this our session will end. हम अक्सर मैं लॉजिक पढ़ाते वक्त पार्टिसिपेंट्स को बताता हूँ ये उम्मुल खबाइस, हाफ ट्रूथ. हाफ ट्रूथ पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक है. A good argument must not ignore or suppress important facts or evidences by including which an argument may support a different conclusion. For example, an employee argues he was absent since he was in hospital, therefore no disciplinary action should be taken against him. एक एम्प्लॉई जो कि कल गैर हाजिर था आज आके वो अपने बॉस को कहता है कि सर आई वाज इन हॉस्पिटल सो प्लीज डोंट टेक एनी एक्शन अगेंस्ट मी. द बॉस से ओके ओके, but he didn't tell the boss what he was doing in the hospital. He went to see a friend. Even the friend is not sick, he works in the hospital. They had gupshup all the day, and after gupshup they went for shopping. अब अगर ये बात बॉस को पता चल जाए कि what he was doing in the hospital, the decision of the boss will dramatically change. इसको हम कहते हैं suppressing the evidence.
आधा सच लोगों को बताना, ताकि उनके, मैंने बताया ना, एन आर्ग्यूमेंट चेंजेस योर परसेप्शन, इट चेंजेस योर थिंकिंग एंड फाइनली इट शेप्स योर एक्शंस। तो आधा ट्रुथ हम मैनिपुलेशन के लिए बताते हैं, ताकि हम जैसे चाहते हैं उस तरह के नताइज हासिल किए जा सके। अब इसकी शक्ल क्या होती है? एविडेंस ए, बी, सी आर अवेलेबल। एविडेंस ए सपोर्ट्स द क्लेम पोजीशन ऑफ आर्ग्यूअर 1. Evidence B supports the claim or position of arguer 2. Evidence C supports the claim of both the arguers. So you will see that arguer 1 will present A and C and will suppress B because B is going against him. Arguer 2 will present evidence B and C and will suppress A because A goes against him. तो क्या किया हमने? फैक्ट्स को छुपा दिया ताकि अपनी मर्जी के कंक्लूजन, वो अक्सर मैं मजाक में कहता हूँ कि हमने ये पहले से सोच लिया कि जब भी कौवा घर में बैठेगा और मेहमान आएंगे, तो 10 दफा कौवा बैठा और मेहमान नहीं आए, हमने हमने उस डेटा को काउंट ही नहीं किया। एक दफा कौवा बैठा और मेहमान आ गए, हमने कहा देखा है कौवा बैठा है तो मेहमान आ गए। तो क्या क्या? सप्रेसिंग द एविडेंस। वो सारा एविडेंस जो कि मेरी आर्ग्यूमेंट के खिलाफ जा रहा था, मैंने उस सबको छुपा दिया, और वो एविडेंस जो कि मेरी आर्ग्यूमेंट के हक में जा रहा है, मैं उसको सरफेस पे ले आया। इस नॉर्मली वी यूज दिस argumentative strategy for manipulation and playing with the emotions or judgments of the people. Thank you very much. ये सवाल, ये मेरा ईमेल एड्रेस है, अगर किसी को किताबें या कोई और मटेरियल चाहिए हो तो मैं उसको दे सकता हूँ, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं क्वेश्चन और आंसर लूंगा। हम ये चैट पे क्वेश्चन आंसर, हाँ चैट, ये इतने बहुत सारे तेजी से आएंगे तो मैं, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये हमें Sayyid Ali Naqvi, Kazmi, knowledge is virtue according to Socrates. Can we consider any knowledge as virtue? Please answer the question. देखिए, नॉलेज की डेफिनेशन सुकरात के ख्याल में नॉलेज वर्चू था। मैं जल्दी से इस सवाल का जवाब दूं। सुकरात के मुतालिक हम ज्यादातर अफलातून के से जानते हैं। अफलातून का यह ख्याल था कि नॉलेज, जस्टिस, टेम्परेंस और ये 3-4 चीजें उनके ख्याल में एक ही चीज के नाम थे। वक्त गुजरने के साथ साथ वर्चू एक, अगर थोड़ा सा मैं रेफरेंस दे दूं जिसको, नकवी साहब को, आप थोड़ा सा अरस्तु की वर्चू एथिक्स को पढ़ लेना। तो पहले हम नॉलेज को वर्चू समझते थे, अभी आहिस्ता आहिस्ता हम नॉलेज को वर्चू समझने के बजाय हम समझते हैं कि नॉलेज जो है वो पावर बन गया। अब नॉलेज इज नो मोर वर्चू, इट इज पावर। ये क्वेश्चंस इतनी तेजी से स्लाइड कर रहे हैं कि मैं इनको नहीं देख सकता। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैं स्लाइड्स को जरूर शेयर करूंगा।
अच्छा, थैंक यू। ये मुझे सवाल एक जो अभी हमारे कलीग ने बताया कि किसी ने पूछा कि कोर्ट के डिसीजन एविडेंस बेस्ड होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स बेस्ड नहीं होते। कोर्ट्स के डिसीजन, सारे डिसीजन आर्ग्यूमेंट्स बेस्ड होते हैं, जिसमें एविडेंस को एज अ प्रेमिस लिया जा रहा होता है। एविडेंस जो फैक्चुअल एविडेंस होता है, या जो फैक्ट्स होते हैं, या जो शवाहिद होते हैं, या जो फोरेंसिक होते हैं, वो दलाइल के तौर पे पेश किए जा रहे होते हैं। इंसान जब भी फैसला करता है वो आर्ग्यूमेंट की बुनियाद पे करता है। तो जज एक डिडक्टिव आर्ग्यूअर की तरह वो सारे एविडेंस को लेके उस पे रैशनल प्रोसेस अप्लाई करके उससे एक डिसीजन तक पहुंचता है, जिसमें कॉन्ट्रडिक्शंस का ख्याल रखा जाता है। तो कोर्ट में एविडेंस जो होता है वो दलाइल, एविडेंस दलाइल की तरह होते हैं जो कोर्ट में एविडेंस दिए जा रहे होते हैं। कोर्ट में तो सबसे ज्यादा आर्ग्यूमेंटेशन होती ही कोर्ट ऑफ लॉ में। उर्दू में लॉजिक की कौन सी किताब है? उर्दू में तो कोई ऐसी किताब नहीं है, मुझे तो कम से कम नहीं पता मन। अच्छा, उर्दू में लॉजिक की किताबें जो है ना, वो दरस निज़ामी में लॉजिक एक कंपलसरी कोर्स है जो कि दरस निज़ामी में पढ़ाया जाता है। ये किसी ने पूछा है व्हाट इज सिलॉजिज्म। सिलॉजिज्म एक डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट होती है जिसमें दो प्रेमिसेस और एक कंक्लूजन होता है। तो जब किसी आर्ग्यूमेंट में कंक्लूजन दो प्रेमिसेस की बुनियाद पर ड्रॉ किया जाए उसको हम सिलॉजिज्म कहते हैं। आर्ग्यूमेंट परसेप्शन की बुनियाद पे बनाई जा सकती है। बहुत सारे लोग आर्ग्यूमेंट परसेप्शन की बुनियाद पे बनाते हैं। अगर वो परसेप्शन ठीक हैं तो जाहिर बात है आप ठीक आर्ग्यूमेंट पे जाएंगे, और अगर वो गलत है, बायस्ड है, तो फिर जरूरी बात है वो गलत होगी। पीपल हु प्ले विद वर्ड्स, जिसने लिखा है कि गुड डिसीजन में जब भी आपको ये समझ आए कि ये वर्ड एम्बिगुअस इस्तेमाल हो रहे हैं या वर्ड्स के साथ प्ले किया जा रहा है, तो वहां पे सबसे जो बेहतर इलाज है वो है आस्क फॉर डेफिनेशंस। आप उनको कहें कि डेफिनेशन, इस वर्ड को कैसे डिफाइन करते हैं। वर्ड्स की डेफिनेशंस के बाद बहुत सारे डिसएग्रीमेंट्स खत्म हो जाते हैं। फलसफा, लॉजिक के सारे टूल्स जो हैं वो ज्यादातर फलसफियों ने बनाए हैं, क्योंकि फलसफी शुरू में बहुत ज्यादा बहस मुबाहिसे में होते थे, तो उनको एक ऐसा टूल चाहिए था जो कि उस बहस मुबाहिसे को मेजर कर सके, उसको गेज कर सके। लॉजिक एक को अरस्तु एक ऑर्गेनन कहता है। ऑर्गेनन मतलब एक टूल, एक डिवाइस, जो कि एक आर्ग्यूमेंट को जब हम लगाएं या एक आर्ग्यूमेंट को उस पर चेक करें तो वो आर्ग्यूमेंट को ठीक या गलत बता दे। आजकल लॉजिक क्रिटिकल थिंकिंग फिलोसफी डिपार्टमेंट से निकल के हर डिपार्टमेंट में पढ़ाया जाता है। मैं, आप लोग चूंकि कॉलेज के प्रिंसिपल्स और पढ़ाने वाले हैं, कल को आप में से बहुत सारे लोग प्रिंसिपल्स बनेंगे। दुनिया जहान में लॉजिक एंड क्रिटिकल थिंकिंग कॉलेज लेवल के सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। हमारे प्रोविंस में भी बहुत सारे कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है, मगर मसला यह है कि फलसफे की पोस्ट्स एडवर्टाइज नहीं होती हैं, जिसकी वजह से कॉम्पिटेंट लोग आके नहीं पढ़ा सकते और रॉन्ग अथॉरिटीज पढ़ाती हैं। ये याद रखें कि इखलाकियात, एथिक्स और लॉजिक एंड क्रिटिकल थिंकिंग फिलॉसफी के दो कोर्सेज हैं जो दुनिया जहान के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को पढ़ने पड़ते हैं। पेशावर यूनिवर्सिटी में तकरीबन सारे डिपार्टमेंट्स में ये पढ़ाया जाता है। हमारे पास इसके टीचर्स की तादाद बहुत कम है, जिसकी बड़ी वजह यह है कि इसकी जॉब अपॉर्चुनिटी कॉलेजेस में नहीं आती। बहुत सारी पोस्ट्स आती है मगर फलसफे की नहीं आती, इसलिए बहुत कम लोग फिलॉसफी में आते हैं। लॉजिक, जैसे कि मैंने बताया कि फिलोसोफर्स ने इसके सारे टूल्स बनाए हैं, और अब चूंकि इसको फिलॉसफी के लोग पढ़ाते हैं, मगर ये सारे डिसिप्लिन्स के लिए बहुत जरूरी सब्जेक्ट, क्योंकि डिसीजन मेकिंग जहाँ पे भी हो रही होती है, एकेडमिक राइटिंग जहाँ रही होती है, यहाँ पे फिलॉसफी की और लॉजिक की जरूरत है। इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड, जैसे कि मैंने बताया, नॉर्मली हम ये समझते हैं कि डिडक्शन, इन डिडक्शन वी मूव फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर, एंड इन इंडक्शन वी मूव फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। But I explained it that in deductive arguments, the claim is that premises have provided complete evidence, irrefutable evidence.
in such a way that if the premises are true, the conclusion must be true. If this claim is correct, deductive argument is valid, invalid otherwise. Inductive arguments are probable. The claim is not that premises provide conclusive grounds. The claim is that premises provide probable grounds. हाँ, ये बहुत बड़ी डिस्कशन है कि नॉलेज और विजडम में कोई फर्क है. नॉलेज और विजडम में हम असल में फिलॉसफी को कहते ही है कि फिलॉसफी सर्च फॉर नॉलेज और सर्च फॉर विजडम. विजडम का मतलब है बहुत बड़ी चीज है जिसमें आपको फैक्ट्स भी पता हो, जिसमें नॉलेज भी हो, जिसमें कॉन्टेक्चुअल डिटेल्स भी हो. मैं आम अल्फाज में, चूंकि बहुत लंबा टॉपिक है, एक पीएचडी की डिग्री होने से ये जरूरी नहीं कि आप वाइज भी. ठीक है, विजडम एक बड़ी चीज है थोड़ी. और अगर आपने बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है तो ये जरूरी नहीं कि आप वाइज नहीं है. विजडम, जिसने भी ये सवाल लिखा, मैंने नहीं पढ़ा, मुझे जो हमारे कलीग बैठे हैं उन्होंने ये बताया. विजडम जो है ना, इट्स जरा बड़ा लफ्ज है. सुकरात के जमाने में नॉलेज और विजडम को एक ही तरह ट्रीट किया जा सकता था, किया जाता था. मगर चूंकि आजकल नॉलेज को हम ज्यादातर डिग्रीज के साथ एसोसिएट किया हुआ है, तो इसलिए थोड़ा विजडम थोड़ा पीछे चला गया. विजडम इज अ बिगर वर्ड. लॉजिक के बारे में मैंने आपको बताया, लॉजिक इज द स्टडी ऑफ मेथड्स एंड टेक्निक्स which are used to differentiate good arguments from bad arguments. प्रोपोजिशन का मतलब है, प्रोपोजिशन और स्टेटमेंट को मॉडर्न लॉजिक में हम एक ही मीनिंग में लेते हैं. प्रोपोजिशन स्टेटमेंट इज a cognitively meaningful sentence. It is a sentence that can be affirmed or denied. डायलेमा एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे आपको ये नहीं समझ आ रहा होता कि मुझे इस साइड पे जाना है या इस साइड पे जाना है. इसको हम डायलेमेटिक सिचुएशन कहते हैं. जिसको, ठीक है, मगर जिसमें फॉल्स इधर आर इज अ फॉल्स डायलेमा. जो हमने फेलिसी पढ़ी है वो एक फॉल्स डायलेमा थी. मैं बुक्स रिकमेंड कर दूंगा, बल्कि मैं इमरान सर को किताबें भिजवा दूंगा और वो फिर किताबें आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे. एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रीमिस एंड प्रायोरी. ये असल में ए प्रायोरी है. प्रीमिस किसी भी आर्ग्यूमेंट में दलील है जो कंक्लूजन के लिए इस्तेमाल की जाती है. ए प्रायोरी वो नॉलेज है विच इज प्रायर टू एनी सेंस एक्सपीरियंस. इसके मुकाबले में जो दूसरा वर्ड है वो ए पोस्टीरियोरी है, जिसका मतलब है सेंस एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज. How can we get complete training in logic and critical thinking? Obviously, you will have to take a course for it, a complete course. और जिस स्टेज में आप लोग हैं, आप लोग खुद चुके कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए ट्रेनिंग का एक तरीका ये है कि आप इसके कोर्सेज देखें, आप इसकी किताबें देखें और इसको प्रैक्टिस करें. ये एक सवाल बार बार आ रहा है कि हाउ टू डील विद सच पीपल हु प्ले विद वर्ड्स एंड गेट अ गुड पोजीशन, स्पेशली इन प्रिंसिपल ऑफिस. मैं पर्टिकुलर्स पे नहीं जा सकता, मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि जब भी कोई if someone is playing with words, तो ask for definitions. How can we get complete training in logic critical thinking? मैंने इसका जवाब दे दिया है. फिलोसोफाइजिंग, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, मोहम्मद अमजद साहब ने लिखी है. फिलोसोफाइजिंग स्लोज डाउन एक्शंस, डजंट इट? यस यस यस. मैंने शुरू में बताया तुम्हें, जब मैंने कहा ना कि 110 रुपए का सौदा है, बैट 100 रुपए महंगा है, तो आपने देखा जल्दी सोचने में बहुत सारे लोगों ने गलत जवाब दिए. हमेशा ठीक सोच जो है एक लंबे प्रोसेस का नतीजा होती है, जिसमें पूरी डेलिब्रेशन होती है. फैक्ट्स को उनके एप्रोप्रिएट कॉन्टेक्स्ट में देखना होता है. बड़े फैसले हमेशा सोच समझ के लिए जाते हैं, जो कि यस थिंकिंग प्रोसेस को स्लो करते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे you arrive at truth, you arrive at right solutions. Thinking impulsively may be quick,
but you may not arrive at right conclusions. Most of the people suffer, most of the nations suffer, क्योंकि उन्होंने पूरी deliberations नहीं की होती, पूरे सोच के प्रोसेस से नहीं गुजरे होते, कानून साजी में पूरे सोच के प्रोसेस में नहीं से गुजरे होते, बल्कि impulsive thinking की होती है. How to improve critical thinking practice? बुक्स को पढ़ें और प्रैक्टिस करें. MPhil is Master of Philosophy, PhD is Doctor of Philosophy. आपकी आखिरी डिग्री फलसफे की डिग्री होती है. इसका मतलब होता है किसी एक चीज के बारे में आपके पास ओरिजिनलिटी है और आपके पास उस चीज के बारे में नॉलेज है, यानी जो आपके बिलीफ है आपके पास उस बिलीफ की जस्टिफिकेशन भी है और मेथोडोलॉजी भी है. इसीलिए MPhil और PhD थीसिस में आपका एक चैप्टर या 2 चैप्टर मेथोडोलॉजी के होते हैं. जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ तक आप पहुंच जाते हैं. डायलेक्ट्रिकल मटेरियलिज्म मार्क्स का मटेरियलिज्म है. हम लॉजिक आज पढ़े. तुम्हारे सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, काश हमारे पास ज्यादा टाइम होता. जी, मेरा ईमेल एड्रेस है shuja@uup.edu.pk. इमोटिवली न्यूट्रल लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिस तरह अब ब्यूरोक्रेट एक इमोटिवली चार्ज वर्ड है नेगेटिव, गवर्नमेंट ऑफिशियल एक इमोटिवली, गवर्नमेंट सर्वेंट एक इमोटिवली चार्ज वर्ड है पॉजिटिव, सेम आदमी के लिए. गवर्नमेंट ऑफिशियल एक इमोटिवली न्यूट्रल वर्ड. डायलेमा एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपको ये नहीं समझ आ रहा होता कि ये पोजीशन ठीक है या, इसको हम डायलेमेटिक पोजीशन कहते हैं. हाँ जी, रिसर्च मेथोडोलॉजी में असल में आप फिलॉसफी ही पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जितनी फिलॉसफीज आप पढ़ते हैं, रियलिज्म या प्रेगमेटिज्म या आइडियलिज्म या डिडक्टिव मेथड या हाइपोथेटिकल डिडक्टिव मेथड कॉल पापर का, ये सारे के सारे, या ये जो आप पढ़ते हैं पॉजिटिविज्म, ये सारे की सारी फिलोसॉफिकल पोजीशंस हैं. आपको इसीलिए तो फाइनली डिग्री डॉक्टरेट की जो मिलती है वो फिलोसफी की होती है. सर, सम यूज क्रिटिकल थिंकिंग फॉर नेगेटिव पर्पस. यू आर राइट. लोगों को आर्ग्यूमेंटेशन का तरीका आ जाए, अच्छा आर्ग्यूमेंटेशन का, तो वो लोगों को मैनिपुलेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. ये जिन्होंने लिखा है कि लेक्चर बहुत अच्छा था या बहुत, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ. आई एम अ वेरी हम्बल स्टूडेंट ऑफ फिलोसफी. और फलसफा पढ़ाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. फिलोसफी पढ़ाना और लॉजिक पढ़ाना मेरे लिए ऐसे जैसे कि मैं अपनी लव स्टोरी सुना. आई एम कमिटेड टू इट. In opening of lock, both 1 and 4 have same situation, but you selected 4 and rejected 1. 1 को आमिर मोहम्मद साहब हमने इसलिए रिजेक्ट किया कि वो दरमियान में था और रॉन्ग प्लेस था, और लेफ्ट और राइट की दोनों पोजीशंस ऑक्युपाई हो चुकी थी 0 और 2 से, तो इसलिए हमें 1 को एलिमिनेट करना पड़ा. 4 जो था वो अपने कोड में राइट साइड में पड़ा था, जो कि रॉन्ग पोजीशन थी, जिसको हम, जो कि दरमियान में पोजीशन. तो हमें 1 को इसलिए रिजेक्ट करना पड़ा क्योंकि 1 वाज रॉन्ग प्लेस्ड और बोथ लेफ्ट एंड राइट वर ऑक्युपाइड बाय 0 and 2. आप कह रहे हैं व्हाई वी नेवर इंक्लूड इस्लामिक फिलोसफी इन आवर लेक्चर्स. मेरे ख्याल में हम दोबारा से, हमने बताया ना, मत देखो कि कौन कह रहा है, ये देखो कि क्या कह रहा है. तो चूंकि लॉजिक पे बहुत सारा काम जो है वो इसका मजहब के साथ ताल्लुक नहीं है, हमने आज भी लेक्चर में लॉजिशियंस को नहीं देखा. मैं सिर्फ आपकी इत्ला के लिए बता दूं कि हम अरस्तु को उस्ताद अव्वल कहते हैं और अल फराबी को उस्ताद सानी कहते हैं. लॉजिक में जो बड़ा काम है वो फिर अल फराबी साहब.
मैथमेटिक्स लॉजिक जब ज्यादा आप इसकी डेप्थ में जाते हैं तो लॉजिक दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है, एक है इनफॉर्मल लॉजिक और फॉर्मल। फॉर्मल लॉजिक इज एफडीएल, फॉर्मल डिडक्टिव लॉजिक। मैथ्स, कंप्यूटर साइंस और ज्योमेट्री में आप एफडीएल इस्तेमाल करते हैं, फॉर्मल डिडक्टिव लॉजिक। रसल के ख्याल में लॉजिक इज द चाइल्डहुड ऑफ मैथमेटिक्स, हैड देयर बीन नो लॉजिक देयर वुड हैव बीन नो मैथमेटिक्स। तो मैथ्स के जितने प्रिंसिपल्स हैं, ये जितने लॉज आप पढ़ते हैं, जिसमें डी मॉर्गन्स लॉ है और लॉ ऑफ एसोसिएशन है, डबल निगेशन है, ये सारे के सारे लॉजिक के प्रिंसिपल्स। मेथड बड़ी टर्म है कि मेथड क्या है, पॉजिटिविज्म है या क्या है। मेथडोलॉजी, रिसर्च मेथडोलॉजी का मतलब ये लिखते हैं, आप अपने बताते हैं कि जो मेथडोलॉजी आपने फॉलो की है इस रिसर्च में वो क्या है। प्रैग्मेटिज्म वो फिलॉसफी है जिसमें हम प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस को देखते हैं। रियलिज्म वो फिलॉसफी है जिसमें हम मैटर और माइंड दोनों को कंसिडर करते हैं। आइडियलिज्म वो फिलॉसफी है जिसमें हम आइडियाज को ज्यादा कंसिडर करते हैं। 20वीं सदी में विलियम जेम्स और चार्ल्स सैडलर पर्स का ये ख्याल था कि हमें प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस को ज्यादा देखना चाहिए। इसीलिए अब जब आप रिसर्च करते हैं तो यू ऑल्सो राइट जस्टिफिकेशन ऑफ योर रिसर्च, ये रिसर्च की प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, किसी ने सिर्फ प्रेगमेटिज्म लिख के 2 क्वेश्चन डाले हुए हैं, मगर सवाल बहुत अच्छा किया है मसूद जान साहब ने। जो अब जो टर्म है ना वो रिसर्च नहीं है, वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। पाकिस्तान जैसे ममालिक जिनमें बहुत सारी रिसर्च हो रही है, जो मेरे कलीग्स क्वेश्चंस कर रहे हैं या जिनके साथ मेरी आज बात हुई है, उसमें बड़ा मसला ये है कि हम रिसर्च कर रहे हैं ग्रेड्स के लिए। इसलिए आप लोगों के 50-50, 100-100 पेपर देखते हैं, मगर हम गंदम में खुद कफील नहीं है। बिजली अभी तक हमने नहीं बनाई है। रेलवे का निज़ाम हमारा ठीक नहीं है, क्योंकि प्रोफेसर्स को छोटी सी तनख्वाह को बढ़ाने के लिए पेपर हम लिखते हैं। हम डेवलपमेंट के लिए पेपर नहीं लिखते। जिन ममालिक ने तरक्की की है वहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज द वर्ड। वो रिसर्चर्स ज्यादा कामयाब होते हैं जिनके काम को डेवलपमेंट में इस्तेमाल किया जाता है। बहुत अनफॉर्चुनेट है, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे रिसर्च को ग्रेड के साथ लगा दिया गया है, और इसीलिए लोग पेपर लिख रहे होते हैं, रिसर्च कर रहे होते हैं सिर्फ ग्रेड्स के लिए, डेवलपमेंट के लिए नहीं। ये हमारे हायर एजुकेशन के बड़े बड़े मसाइल में से एक मसला। हाँ, रोजमर्रा की जिंदगी में अगर कोई अपनी बात पे अड़ गया तो आप समझ ले कि वो क्रिटिकल थिंकर नहीं है ना, उसके लिए अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय इसके कि वो सच तक पहुंच जाए। तो आप उसको समझाने की कोशिश कर सकते हैं, मगर ये एटीट्यूड का मसला है। एटीट्यूड के मसले को परसुएजन के लिए और ज्यादा परसुएसिव टेक्निक्स इस्तेमाल करनी पड़ती। हमने अभी किसी ने पूछा ना, वाइज मैन, अ क्रिटिकल थिंकर इज अ वाइज मैन। wise man would never defend his or her point of view. He would always be interested in truth. तो अगर उसको ये लग जाए कि ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू गलत है तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। ये किसी ने बहुत अच्छी बात लिखी है, एजाज ने, इज देयर एनी अदर वे टू सॉल्व द लॉजिकल क्वेश्चंस विदाउट इंटरप्रेटिंग देम केयरफुली। मेरा नहीं ख्याल कि वो सोक्रेटिस कहता था अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। हमें जिंदगी की हर चीज को केयरफुली जज करना चाहिए। एपिस्टेमोलॉजी, ऑन्टोलॉजी, एक्सियोलॉजी, ये बहुत सारे सवाल तुम लोगों के ना फिलोसफी। एपिस्टेमोलॉजी इज थ्योरी ऑफ नॉलेज, ऑन्टोलॉजी इज थ्योरी ऑफ एग्जिस्टेंस, एक्सियोलॉजी इज थ्योरी ऑफ वैल्यूज। एपिस्टेमोलॉजी में हम ये देखते हैं कि कौन सा नॉलेज क्या है, नॉलेज की क्या लिमिट्स है, नॉलेज कैसे हासिल होता है। ऑन्टोलॉजी मेटाफिजिक्स की ब्रांच है जिसमें हम देखते हैं कि क्या वाकई एग्जिस्ट करता है। और एक्सियोलॉजी में हम देखते हैं कि वैल्यूज कैसे बनती हैं, एथिकल वैल्यूज क्या बनती हैं, बाकी चीजों की वैल्यूज कैसे बनती हैं, अच्छा माशरा कैसे बनता है, अच्छा पॉलिटिकल सिस्टम कैसे बनता है।
Thank you very much. Thank you. It was I enjoyed a lot. मैं कभी इतना नहीं एंजॉय करता चूंकि चैट पे बहुत सारे मुसलसल पार्टिसिपेशन आ रही है बहुत सारे लोगों की. अभी ढेर सारे सवाल है. फॉर एग्जांपल एग्जिस्टेंशियल आतिफ पूछ रहे हैं एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या है. एग्जिस्टेंशियलिज्म भी बाकी फिलोसफीज की तरह एक फिलोसफी है जिसमें एम्फेसिस जो है ना वो होने पे, वजूदियत इसको हम कहते हैं. तो थैंक यू. गॉड ब्लेस यू. और मेरे लिए भी दुआ किया करिए. खुदा हाफिज.